Stefan Lerch, Union Berlin zu Gast in Wolfsburg. Wie viel Olympique Lyon steckt aber dennoch in dieser Partie? Das sind zwei ganz unterschiedliche Spiele und das wissen wir auch. Ja, wir hatten jetzt ein bisschen Zeit, das zu verarbeiten. Das war ein großes Spiel natürlich für uns am Dienstag, aber das ist in der Vergangenheit und wir haben es auch gerade eben nochmal angesprochen im Hier und Jetzt sein und der Gegner heißt jetzt Union Berlin und da wartet auch wieder eine harte Nuss auf uns, die wir knacken wollen, aber es wird wie gesagt ein ganz anderes Spiel und jetzt haben wir auch wirklich nur dieses Spiel im Kopf und das wird auch anstrengend genug. Aber dann sind wir doch gleich beim Thema. Was wird's für ein Spiel? Union zuletzt, wie ich fand, beeindruckend mit dem 4:1 gegen Werder Bremen. Ja, absolut. Kommen natürlich jetzt auch mit entsprechend Rückenwind zu uns. Ich denke, ja, so werden sie auch auftreten. Haben nicht viel zu verlieren, wollen den Schwung mitnehmen, haben auch entsprechend Qualität auf dem Platz. Es wird spannend zu sehen sein, wie hoch sie dann auch anlaufen werden oder ob sie doch ein bisschen tiefer stehen werden. Wir sind auf beides vorbereitet, wollen dann natürlich auch unsere Qualitäten auf den Platz bringen. Ja, hier die 3 Punkte behalten, das ist unser Ziel und dafür werden wir alles geben. Das dann wahrscheinlich auch mit der nötigen Frische in der Mannschaft. 6 Wechsel in erster Linie unter der Überschrift Belastungssteuerung? Ja, ich glaube, ich habe oft genug betont, 8 Spiele in 4 Wochen, das ist Wahnsinn und da haben wir auch eine Verantwortung gegenüber den Spielerinnen, dass wir da auch immer ein Auge drauf haben wir haben jetzt eben nur Finalspiele. Jedes Spiel ist für uns wichtig, jedes Spiel ist sehr intensiv auf seine Weise und deswegen verteilen wir die Kräfte entsprechend, wo es dann auch Sinn macht aus unserer Sicht und auch die Spielerinnen, die die ganze Zeit Gas geben, haben es dann auch verdient, dann heute auch zu beginnen und da haben wir auch vollstes Vertrauen und und dann schauen wir weiter. Eileen Pöse, willkommen in Wolfsburg mit einem 4:1 gegen Werder Bremen im Rücken. Wie viel Schwung hat das Ihrer Mannschaft nochmal gegeben? Ja, es hat natürlich erstmal für gute Stimmung gesorgt, aber natürlich auch, weil wir einen guten Auftritt hingelegt haben und danach trotzdem eine sehr, sehr konzentrierte Trainingswoche hatten und dementsprechend eben auch jetzt in dieses Spiel gehen. Wie ist der Ladezustand des Akkus bei der Mannschaft? Wenn ich es genau gesehen habe, ist es die gleiche Elf wie unter der Woche. Ja, der Ladezustand ist gut. Wir haben zwar Montag gespielt, aber jetzt eben erst Sonntag. Von daher ist alles in Ordnung. Sie haben hier einen freien Tag gehabt. Wir haben einige Dinge ein bisschen angepasst dann in der Trainingssteuerung und heute ist alles wieder fit. Kommt der VfL Wolfsburg möglicherweise genau zur rechten Zeit? Ihr seid gut drauf, 4 Tore geschossen, 4-mal in Folge nicht verloren. Und man kann ja durchaus drauf kommen, dass beim VfL die Champions League ganz sicher im Kopf ist. Ja, sicherlich ist die Champions League im Kopf, aber trotzdem ist es eine Top-Mannschaft. Wir wollen versuchen, hier alles reinzuhauen, so wie wir es gegen Bremen auch gemacht haben und versuchen, den einen oder anderen Moment vielleicht auf unsere Seite zu ziehen, einen guten Tag zu erwischen. Aber wir sind uns natürlich voll darüber im Klaren, dass der VfL Wolfsburg, auch wenn sie einen Tick durchrotieren, eine Qualität auf den Platz bringt, wo wir erstmal ganz, ganz viel dagegen stellen müssen. Und das wollen wir machen und dann wollen wir schauen, was bei rauskommt. Die Wölfinnen zuletzt 3-0. Was muss passieren, damit die Serie heute endet? Ja, wahrscheinlich ein Tor schießen. Das ist grundsätzlich erstmal der Plan, aber wie das dann funktioniert, werden wir sehen. Auf den Punkt. Vielen Dank, wir wünschen alles Gute. Gerne, tschüss. Good afternoon, everybody. We're at the Auk Stadion here in Wolfsburg. We're set for another compelling chapter in the Google Pixel Frauen-Bundesliga, where European momentum meets domestic ambition.
Wolfsburg head into this one in formidable form under Stefan Lerch. 5 straight victories in all competitions and riding the wave of a huge result in midweek. That 1-0 win over Lyon, placing them firmly on the brink of a UEFA Women's Champions League semi-final, with a decisive second leg still to come in France this coming Thursday. But there's no room for distraction today. Bayern Munich continue to dictate the pace at the summit, having beaten Nuremberg 2-0 on Saturday. So Wolfsburg know anything less than 3 points today risks allowing that gap to stretch even further. For the visitors today, Union Berlin, what a story this continues to be. In their first ever season at this level, they've grown into this league impressively. Unbeaten in 4 matches, sitting 9th in the table on 26 points and showing real resilience after a mixed opening phase. They've now got structure, there's belief, and increasingly there's a team capable of competing with the very best. So the equation is simple today. Wolfsburg chasing down leaders Bayern Munich, Union Berlin chasing credibility. Kickoff here in Wolfsburg is only a few minutes away. As you heard from Stefan Lerch there, the schedule for Wolfsburg is relentless. 8 games in 1 month. Fresh from that 1-0 win over Lyon, with the return leg set for this Thursday, and then a DFB Pokal semi-final against Carl Zeiss Siena still to come a week today. So let's take you through the team news. So Stefan Lerch has made 6 changes to the side that beat Lyon in the Champions League. So in come Juano Levels, Guru Bergsvand, Joel Weidemeyer, Cora Sakai, Judith Pujols, and Annie Lindland. Alexandra Popp, Lena Latvine and Kessia Busse are all unavailable. And midfielder Justin Kieland failed a fitness test. She was forced off against Lyon. Sophia Kleinherrn, she returned to training this week. She passed the fitness test. She finds herself on the bench. Annalena Heidenreich is your referee today, assisted by Arena Ver and Juan Martinez. For Union Berlin, head coach Eileen Pöser, unsurprisingly, has named the same starting 11 that so impressively beat Werder Bremen last weekend. Goalkeeper Kara Bözel, she remains sidelined, so Nadine Bull continues between the sticks. Coach Pöser is without a number of first-team players, including Alma Agard, Anna Ehling, Kara Bözel, as I mentioned, Karina Yanes, Leona Köster, Marianne Nowak and Tomka Schneider are all out injured. So we're just moments away from kickoff here at the Auk Stadion in the Google Pixel Frauen Bundesliga. All eyes on Wolfsburg, who are right in the groove at the moment. 5 straight wins and full of confidence after that impressive 1-0 victory over Lyon. A Champions League semi-final berth is now within touching distance. Domestically though, the focus is quite clear. Keep the pressure on Bayern Munich at the top, despite the 14-point gap. Union Berlin arrive with their own belief. Unbeaten in 4, settling well into their first ever Bundesliga campaign, and looking to climb the table today with what would be a first ever victory over the She-Wolves in what is the first ever competitive meeting between the two sides here at the Auk Stadion. So goalkeeper Nadine Bull getting an early touch of the football right at the beginning of the game. And Berlin looking to settle very early. Guru Bergsvand back in the team today, giving away that first free kick just on the halfway line. So free kick to Union, just inside their own half. And that should be a throw-in
to the home side, which it isn't, and Union Berlin take over. Here's an opportunity for Wolfsburg to break through the middle. Not many options in front of her. That's a good ball out to the right-hand side. Weidemeyer playing the ball into the centre circle for Bergsvand. If you've been with us recently and watching Wolfsburg, you know that they're very patient at the back, like to get early touches on the ball. Here's Bielda, wearing that protective face mask after receiving a knock recently on the face. Here she is with the throw-in to the home side. Here's Sakai, back in the team today. We'll have a stop and play here because that one hits Hannah Erlings flush in the face. So we'll just have to take a pause for just a moment just to check that she's okay. You can see Sakai just trying to control the ball, but unfortunately smashing it right off the face of Hannah Erlings. And we'll start with a drop ball. Here's Bielda. Tries to chip that one forward. Erlings doing well. And Berlin able to clear, but only as far as Janina Minga. Here's Bergsvand. Here's Bergsvand again. Here's Bielda. Comes in field to Pedimores. That's good play from Sakai. Bergsvand seeing plenty of the ball in the opening stages of the game. Here's Janina Minga. And that one just has too much pace on the ball, and that one will go out for a goal kick to Union Berlin. Very strong bench today for Wolfsburg. Lineth Berenstein, who got that all-important goal against Lyon in midweek. Huge game coming up for them in France on Thursday, the return leg, to see if they can make the semi-finals of the UEFA Women's Champions League. Wolfsburg were extremely compact out of possession against Lyon, limiting their attacking threat, and they were absolutely clinical when it happened. And then when the moment came, Lineth Berenstein securing that crucial 1-0 advantage. But back to domestic duty today, and they need to close that gap on Bayern Munich, who, as I mentioned earlier, comfortably beat Nuremberg 2-0 yesterday. So as it stands, the gap is 14 points. Here's Bergsvand. Playing the ball out to Weidemeyer in the right-back position. She goes forward to Cora Sakai. Nice turn in field. She tries to switch play, but Union Berlin are able to close that one down. There's Erlings. That one's a little bit loose. And here's Nadine Bull in the Union Berlin goal. Closed down very quickly by Linder. But she's able to clear that one up the park. So throw in to Union Berlin, just inside their own half here, just coming up to 5 minutes played. Both teams still very much settling into this one. And that one should go out for a throw in to Union Berlin. There's Elin Pöser, who is Union Berlin through and through, a former player, now the architect of the team's rise. Steiner Johannes in the Wolfsburg goal. She's going to have to clear with the left foot, which she does, but that one's been cut out by Union Berlin. But that one has struck the hand of Anna Weiss, and that'll be a free kick to Wolfsburg, halfway through their own half here. Guru Bergsvand over it.
looking for options, looking to go short, but she decides to go long. But that one's got far too much on it, and that one's gone out all the way for a goal kick to Union Berlin. That was asking far too much of the Wolfsburg forward players. Here's Nadine Bull for Union Berlin, clearing it long. Here's Sakai for Wolfsburg, coming in field, exchanging passes with Huth. That one will just about make its way through, but unfortunately Annie Lindland is unable to control the ball, and that one goes all the way through to Bull in the Union Berlin goal. So half an opening for Wolfsburg. Here's Annie Lindland, the 19-year-old, making her first start for Wolfsburg today. And it's only her 6th appearance in total, the under-19 Norwegian international. What an opportunity it is for her to impress. That's good play down the left-hand side. It's a good ball to the front stick. But again, Nadine Bull in the Union Berlin goal is aware of the danger, gathers that one, and sets Union Berlin on a move up the left-hand side. Trying to switch play, but Bergsvand is underneath that one. Here's Huth. Comfortable play from the home side. Bergsvand will need to be careful with that one. Here's Ella Pedemors. Now Weidemeyer. Bergsvand coming out to the left-hand side to Pujols. She plays it down the line, but no runners for Wolfsburg. So that one will easily be taken care of. So Berlin looking to launch an attack of their own. That's a good ball forward, and the chase is on. But Weidemeyer is over that one, and she sees that one out for a Wolfsburg throw. Here's Pedemors. Here's Minga. Forced to turn and go back to Bergsvand, but Bergsvand's got some room in front of her. She comes out to the left-back position. Here's Pujols. Here's Bergsvand again. Minga with room and time. Plays in Svenja Huth, who's playing more of a midfield role today instead of her normal midfield position. Here's Weidemeyer. She's got room to get forward here. She's got Sakai in front of her and Tia Bielda. She went forward to Lindland, who was unable to control. Now Berlin with plenty of room down the left-hand side. They've got runners inside here. If she gets her head up and gets the ball into the box. It's not a bad ball from Urschmann, but Huth is on hand to clear. Berlin knocking it back into the 18-yard box, but that's far too easy for Steiner Johannes in the Wolfsburg goal, and she'll be happy to collect those all day long. So Union Berlin showing good intent in the opening 10 minutes, making tracks down the Wolfsburg flanks. Just the final ball into the box, letting them down. Sakai was able to have got her foot on that one, she would have had plenty of room to turn, but unfortunately the ball went underneath her foot, and Union Berlin are able to start again from the back. Tajsajek and Palovek exchanging passes. That one's been broken up by Wolfsburg. Here's Cora Sakai. That one's broken nicely for Janina Minga. Bielda to Weidemeyer. Now Wolfsburg looking to switch the play. 10 minutes gone. Still goalless, still looking for our first chance at goal. Here's Minga, seeing plenty of the ball in the opening 10 minutes, as you would expect from Wolfsburg's playmaker. Jano Levels unable to bring that one down. Good vision though from Weidemeyer. Decent ball forward.
Stefan Lerch said in regards of preparation for this game that it's about keeping things as simple as possible, he said. Positional adjustments, freshness and recovery play a major role and absolutely crucial at this intense stage. As we mentioned, 8 games in just 1 month for Wolfsburg. So they need to use their squad to the absolute capacity, with a number of key players also missing. Here's Bergsvand inside the centre circle for Wolfsburg. She plays in Minga. That's a good ball forward if Pujols can get onto the end of that, but she can't. Union Berlin are able to clear. Down this right-hand side, just in front of the dugout. They come in field. And that should be a foul. It is. Svenja Huth. Guilty of bringing down Tanja Polovec. That's good closing down from Lindland, making it difficult for Union Berlin to play out, but they've managed to work it really nicely down this right-hand side. But Guru Bergsvand comes across and covers, and that one will go out for a throw in deep into Wolfsburg's half for Union Berlin. Excellent ball down the flank. Any Hippel for it. But that one's been broken up by Wolfsburg, but they're unable to clear. And here's a chance now for Union Berlin to get forward, but they're closed down very quickly by Ella Pedamors and Cora Sakai. And the ball broke nicely to Steiner Johannes in the Wolfsburg goal. Cora Sakai, the 21-year-old winger. It's her 13th start today from 18 matches, 4 goals so far this season. And that one should definitely be a foul on Tia Bielda. Hannah Earlings guilty of a heavy challenge on Tia Bielda. Watch again. Just on top of the foot, she gets a crack, but she'll be fine. And we'll be able to continue it. There've actually only been 2 competitive meetings between these 2 clubs in recent times. In 2017, the She-Wolves recorded a commanding 6-0 win in Berlin in the second round of the DFB Cup. At the time, Union was still playing in the Frauen Regionale Nordost. Wolfsburg also came out on top in the first half of this season in front of a very impressive 7,254 spectators at the Stadion an der Alten Försterei. The team securing a 4-1 victory. Although the Berlin side did take the lead through a stunning direct corner from Antonio Halverkamps, if you remember. But the She-Wolves were able to turn that game around impressively with 4 goals in the second half. It's an opportunity for Stefan Lerch just to add some further instructions to his team, with Tia Bielda getting some treatment. Good to saw one for Bielda, but I'm sure she'll be able to run it off. Excellent crowd today inside the Auk-Stadion. The Stadion most definitely delivers one of the most intense, intimate atmospheres in the Frauen Bundesliga, as you can currently hear. The ground built for proximity, pressure and high-performance football. It's actually opened in 2015. The full capacity is 5,200, and as well as being home to the She-Wolves, it's also home to the club's youth teams. The complex situated in Alla Park, right next door to the impressive Volkswagen Arena. So after that short break in play, Weidemeier is over the free kick for the home side. Quarter of an hour gone, still 0-0. There's Pedamors getting the ball forward. It breaks nicely to Sakai. There's Pedamors again. Coming back to Bergsvand. Levels has got room down here on the left-hand side. Looking for the run of Pujols. That's not a bad idea. Saw the late run of Svenja Huth.
just a little bit too much pace on the pass, but a good idea. There should be a foul to Union Berlin, and it is. Cora Sakai bringing down Judith Steinhardt. And that'll be a free kick to Union Berlin, just inside their own half. With an opportunity here to maybe launch one forward, which they do, down the left-hand side. But Bergsvand, once again, is over that one for Wolfsburg. Here's Sakai. She's closed down very quickly by Steinhardt, and that goes out for a home throw-in. Bielda looking for movement ahead of her. Pedemos is coming across, offering herself, but she goes long. Here's Lindland, but that one's been broken up. But again, Wolfsburg are able to pick up the second pieces. But that one will go out for a throw-in to Union Berlin, just inside Wolfsburg's half. Steinhardt over the throw. She goes down the line. Weidemeyer is forced into putting that one into play for another throw into Union Berlin. Steinhardt over it again. And that'll be another throw in to the away side. Very compact and congested down that left-hand side. Bielda's able to break that one up. She plays the ball forward to Lindland. That's an excellent turn from Annie Lindland. And draws the foul inside her own half. Excellent play from the 19-year-old. Does really well. And then draws the foul. Samantha Stoyerwald, guilty. And also receiving the first yellow card of the game. The 27-year-old defender who started every match so far for Union Berlin. So, with just coming up to 20 minutes played, she's going to have to be careful now for the remainder of the game. So Wolfsburg with a free kick, just inside Union Berlin's half, over on the right-hand side. Jamel Weidemeyer over it, she goes short to Minga. She clips it forward, but that one is easily cleared by Berlin. Weiss going forward. It's good play from Levels, showing good strength. Here's Huth. It's well played once again from Lindland. Here's Pujols, quickly closed down. Here's Huth for Wolfsburg. And again, Union Berlin guilty of committing the foul. Leah Kamba and the skipper, Elisa Heiseler, guilty of bringing Huth down. So Wolfsburg with an opportunity to maybe throw one into the mix here, but they decide to go short. Here's Levels, exchanging passes with Bergsvand. Comes infield to Minga. Union Berlin forcing Wolfsburg to go backwards at the moment. It's good press from Union Berlin, making life very difficult for the Wolfsburg back line to get the ball out. Here's Weidemeyer, getting the ball back from Bielda. Here's Guru Bergsvand for Wolfsburg. Exchanging passes with Janina Minga. Now she's forced to go all the way back to Steiner Johannes. Johannes this time decides to clear long. Here's Pedemors on the break, playing the ball into Huth, just outside the 18-yard box. Bielda with an opportunity to cross. Here's Minga. Pujols trying to exchange passes with Levels, and that should be a foul to Union Berlin. Levels just a little bit keen, and she commits the foul. Union Berlin slightly disappointed that the referee didn't wave play on here.
But it'll be a free kick to the side from the capital in the right back position, just in front of the dugouts. Tysak going back to Nadine Bull. Steuerwald. Once again, Union Berlin showing excellent control with the ball. And that has, again, drawn another unnecessary foul. Levels this time. With our referee just asking her to just take it easy, calm things down. It's our second foul in quick succession. So Union Berlin now in a decent area here with an opportunity to put the ball into the box. Wolfsburg playing a high line here just in front of the 18-yard box. So Erlings and Heisler over this one. Let's see if Union Berlin can capitalise on a free kick. Here's Heisler going to the front post. That's not a bad ball. And Steiner Johannes a little bit guilty of not commanding her 6-yard box, and eventually Wolfsburg are able to clear it. And that one eventually goes out for a Wolfsburg throw just inside the Union Berlin half. And that was half a chance for Union Berlin. Plenty of room inside the 18-yard box to try and maybe take the ball down. And eventually, Wolfsburg were able to clear it after a little bit of a misunderstanding between Guru Bergsvand and Steiner Johannes, and eventually they were able to clear the ball. Levels going back to Bergsvand. Once again, Union Berlin very quick to close Bergsvand down, but they've managed to work it out to Thea Bielda. She just about keeps that one in play. Here's Weidemeyer for Wolfsburg. Deep inside her own half. Brings Guru Bergsvand into play. Now here's Levels. Pujols asking for the ball, but Levels is forced to turn back. And go back to Guru Bergsvand, who in turn is forced to go all the way back to Steiner Johannes at the Wolfsburg goal. Levels playing in Pedimors, but that one's been broken up by Union Berlin. Here's Nadine Bull in the Union Berlin goal. It's excellent play. Steuerwald. As always, very calm on the ball for Union Berlin at the back, as is Tysak. Erlings exchanging passes. She's got a little bit of room down this left-hand side, looking for the ball into the box. That's not a bad ball at all. And Steiner Johannes once again on hand to collect the ball. Guru Bergsvand making life very difficult for the Union Berlin attackers, but a good ball into the box from Erlings, creating half a chance for Union Berlin. So here's Bielda, now Minga, closed down very quickly, and that one will go out for a throw into the home side. Pedimos leaving the throw in for Bielda. Cora Sakai offering herself down the line. Here she is. But her touch is a little bit heavy, and that'll go out for a throw-in to Union Berlin. Steiner closely keeping an eye on Cora Sakai. Here she is over the throw-in. Here's Erlings for Union Berlin. That's good
play again from Erlings. We've seen plenty of the ball down that left-hand side. Now Union Berlin are able to switch play. Here's Steinhardt for Berlin. Here's Ida Heikkinen playing the ball forward, but that one's been taken care of by Weidemeyer. Here's Sakai playing it back to Bielda, who in turn goes back to Johannes in the Wolfsburg goal. Johannes goes long, that's over the head of Sakai. And Pedemors is able to just get a foot in. And now Wolfsburg down the left-hand side with Levels, plays it forward to Lindland, who's unable to control. But Minga breaks that one up, looking for the run of Svenja Huth, but that had too much pace on the ball, and that one goes all the way through to Nadine Bull in the Union Berlin goal. Just coming up to half an hour played here in the Augstadion, and still Wolfsburg 0, Union Berlin 0, and we're still waiting the first real opportunity on goal from either side. Here's Weiss for Union Berlin. Closed down very quickly by Levels, and that'll go out for a throw-in to Union Berlin. Here's Anna Weiss, the 27-year-old fullback. Steuerwald is able to clear for Berlin. Bergsvan should have enough pace on that one to play the ball back to Johannes, and she does. Johannes clears with the left foot. Steinhardt. She goes back to Nadine Bull in the Union Berlin goal. Steuerwald closed down very quickly by Lindland. But Union Berlin are able to bring it out from the back. Here's Weiss, needs to be careful. She's got Svenja Huth right on top of her. Again, forced to go backwards. Good press from Svenja Huth. That's a bad ball out. Here's Pedemors. She's got Huth on the right-hand side. Here she is. Exchanges passes. Good Svenja Huth. And Pedemors with half an opportunity, which Nadine Bull uncharacteristically makes a mess of it. And she's lucky to see that ball drop on the right side of the post. So as our first opportunity, 28 minutes gone. Our first effort on goal from Wolfsburg. And it's our first corner kick. So Wolfsburg with the first corner of the game. And it's Levels over it, an in-swinger, right on top of the front post. Guro Bergsvan, that ball came far too quickly at her. Came right over the top of the three defenders. She didn't really see where it had come from, and unfortunately she got her header all wrong, and that one goes out for a Union Berlin goal kick. So half an hour gone, still 0-0, but the first opening for the home side. Steuerwald going long for Berlin, but that one's easily taken care of by Levels. Lindland unable to control. Here's Level again, playing in Pujols. That should be a throw in to Berlin, it is. Here's Anna Weiss over the throw-in for Union Berlin. Sophia Weider making herself available. But again, Wolfsburg are able to break this one up and retain possession inside their own half. Here's Weidemeyer. She's got Thea Bielda to her right. Here she is. Bielda's forced to go back to Weidemeyer. Bergsvan offering herself just outside the centre circle. She plays the ball out to Levels. Here's Pedemors. I beg your pardon, Minga. Here's Minga again. Levels looking for the run of Huth. That's a good ball inside to Pujols. And that should be a foul. It is.
So a foul just inside Wolfsburg's half, and they get on with it quickly. Here's Bielda. Pedamores. Here's Minga for Wolfsburg. Levels down this left-hand side. She's forced to go back to Bergsvand. Here's Joelle Vademeier. She's got room in front of her. Cora Sakai has offered herself over on the right-hand side. Here's Huth. Minga chipping it forward, but I think that's got too much on it. The idea was the right one, but just too much pace on the ball, and that one will go out for a Union Berlin throw-in. Down the right-hand side. Campbell playing the ball back to Weiss. But that's loose from the skipper. Here's Pedamores. Minga playing in Huth. Good ball forward. Huth running into space. Bringing Pujols into play. That's a good ball into the box, but that one's taken care of by Stuyvesant. And that's half a chance from Ella Pedamores. But unfortunately, she's not able to get too much purpose on the ball, and that one is broken up. That's a loose one from Bergsvand. Picked up by Union Berlin. They come down this right-hand side, but that'll be a foul from Levels. And she needs to be careful here, Levels, because that's her third foul now. And yes, the referee's come out. She was given a warning about 10 minutes ago. One more and you'll go into the book. So our second yellow card of the game, Joanna Levels goes into the referee's book. So free kick to Union Berlin, just inside Wolfsburg's half. Kleinhorn over it, as is Hannah Erlings. Kleinhorn on the move. It's played just to the front of the 18-yard box. Wolfsburg unable to clear it with much purpose. That one's deflected off Sakai. Steinhardt will have to be careful. She is. And Union Berlin are forced to go all the way back to their goalkeeper, Nadine Bull. She's looking for movement. She gets it eventually from Amber Tysak. Here's Heisler, but that one's been easily broken up by Pujols. Good play by Judith Pujols. Appreciated by the home crowd. Here's Vademeier for Wolfsburg. 10 minutes to go to the break, still 0-0. Here's Tia Bielda, looking to get forward down the right-hand side. Plays in Sakai. A second touch was just a little bit heavy, but that one's gone out for a throw-in to the home side. Here's Bielda underneath it. She's got Sakai just in front of her. Here she is, playing in Pedamores. Here's Minga. Here's Sakai again, looking for a shot at goal. But Union Berlin are able to close her down. She's unable to get the shot away. And that one's been cleared by Union Berlin, deep into Wolfsburg's half. Here's Bergsvand with plenty of time and room on the ball. Vademeier looking to switch the play. It's a good touch from Levels. Minga playing in Pedamores. It's a good turn from Pedamores. Brings Minga back into play. Here's Levels. That's good play from Kano Levels. Again, Anna Weiss is there to clear things up for Union Berlin. That should go out for a throw-in to the away side, and it is. Deep inside their own half. Anna Weiss over the ball. Throw into Union Berlin. 10 minutes to go to the break. Campbell unable to take that one down. Huth does though. Here's Pujols, faced by two Union Berlin defenders. Leah Camber. That one's broken nicely for Lindland, who plays in Huth for Wolfsburg, just outside the Union Berlin 18-yard box. Here's Pujols looking for the cross, but again, that one's been
closed down very quickly by Leah Kamba. Throw into Wolfsburg. Levels underneath it. Plays in Minga. That one's drilled at Huth and she's unable to control that one. Here's Campbell for Union Berlin. It's all very congested down here on the left-hand side in the right-back position of Union Berlin. But eventually the ball has gone out for a Union Berlin throw-in. It's a good turn. Oh, the short pass to Heisela was the better option, but unfortunately she went long and nobody was running for Union Berlin, so Guro Bergsvan is able to take control of that one and play in Weidemeier. Here's Bergsvan again. Here's Minga for Wolfsburg. Huth. Bielda playing a good ball forward to Cora Sakai. Stuyvesant comes across and takes care of that one, and that'll be a throw into Wolfsburg. Halfway through Union Berlin's half. Here's Sakai. She does well to nip that one back to Bergsvand. Here's Bergsvand again. Here's Pujols with a little bit of room. Here's Levels. Pujols on the run. Here's Huth. Minga looking for runners. But again, Steuerwald is underneath that one for Union Berlin. Lindland making herself busy with lots of purpose. That'll be a throw-in to Wolfsburg. Cora Sakai tried to make things happen down the right-hand side, but she's been marshalled very well today by Steinhardt. The 30-year-old left-back, so experienced in the game. Into her second season now with Union Berlin, making life very difficult for Cora Sakai. Samantha Steuerwald putting that one out for a throw. Here's Lindland. Gone out for a throw into the away team. It's just gone a little bit flat as we come to the end of the first half. Throw into Union Berlin, deep inside their own half. Steinhardt decides to go long, but Pedemores is on hand for Wolfsburg. And Stuyvesant goes long. And that one looked like it'd been held up slightly by the wind. But Levels showing excellent composure inside the centre circle to take that ball down, take control of the situation. Played in Bergsvand, who in turn played in Weidemeier. Here's Bielda for Wolfsburg. Here's Levels down the left-hand side. She's got a little bit of room here if she gets her head up. Huth available infield. She comes out to Pujols. Again, Union Berlin are able to marshal that down the right-hand side. Excellent play from the Berliners. So the home side enjoying the possession of the ball at the moment, 60% to Union Berlin's 40%. 6 efforts on goal so far with just 1 on target. Union Berlin still to register an effort on goal. Campbell making herself busy. Bergsvan had to stretch. The referee decides to bring that one back for the free kick. And having a little quiet word in the ear of Eileen Campbell. Just telling her to be a little bit more careful. Yeah, she launches there with the boots up. And Bergsvan getting the foul for Wolfsburg. So 5 minutes to go to the break. Free kick for Wolfsburg, just inside their own half. Here's Minga, exchanging passes with Bergsvand. Levels. And again, excellent press from Union Berlin, forcing Wolfsburg to go backwards.
That had far too much on that one from Ella Pedamors. Looking to find Tia Bielda. Tia Bielda was unable to control that one, and that one's gone out for a throw into Union Berlin. Here's Campbell. Sakai trying to play in Lindland. But again, Steuerwald is on hand to clear that one for Union Berlin, and that one goes out for a throw-in to Union. Halfway through Wolfsburg's half, but again, Cora Sakai, defensive duties very good today. Union Berlin looking to get the ball forward. It's an excellent ball forward to Eileen Campbell, who's stretched inside the 18-yard box. Steiner Johannes also came out very quickly. Steiner Johannes was able to gather, but it was a foot race between three of them. And she got a slight touch on that one, Eileen Campbell, but not enough to lift the ball over the diving Steiner Johannes. It's good goalkeeping from the 26-year-old. First season with the club. It's her 31st game today. That's need to be careful! And that is a goal for Union Berlin. A terrible mistake and mix-up inside Wolfsburg's 18-yard box. And Union Berlin are able to capitalise on the mistake. And it's 1-0 to Union Berlin. 3 minutes to the break, and that goal came out of absolutely nothing. Bergsvan with a heavy touch. Sophia Weidauer right on top of Guro Bergsvan. The ball broke nicely to Hannah Erlings. And all she had to do was just slot the ball home into an empty net for her second goal of the season. Well, we weren't expecting that with just a couple of minutes to go to the break. Guro Bergsvan will need to dust herself down after that mistake and just get on with the game. So Wolfsburg kick off with just a couple of minutes to go to the break. And with Bayern Munich winning yesterday, don't forget, the gap at the moment is currently 14 points. So Wolfsburg looking for a quick response. And that one will go out for a throw-in to Union Berlin. In fact, that one's gone out for a goal kick to the home side. So as it stands, Union Berlin will go above Cologne into 8th position in the table. A goal out of absolutely nothing. Levels won't get that one, and that one will go out for a throw-in to Union Berlin. Just coming up to the end of the first half. We'll confirm if there's any stoppages for you in just a moment. But Eileen Purser, the Union Berlin head coach, must be absolutely delighted with her side's application in this first half. Only one clear opportunity for Wolfsburg so far, and I can confirm that there's 2 minutes of injury time at the end of this first half. Here's Minga for Wolfsburg. Here's Sakai, down the right-hand side, coming in field. She's got runners and options in front of her. Pujols goes back to Weidemeyer. She crosses, that's not a bad ball. And there's a chance for Minga! What an absolutely sensational strike from Janina Minga. The ball came out of the air. She hit it first time on the volley. Brilliant technique. What a finish from Wolfsburg's number 6.
to the absolute delight of those She-Wolves fans. Take another look. She's got eyes on the ball, and look at that for a finish from Janina Minga. You will not see a better finish in the Google Pixel Frauen Bundesliga this weekend. Absolutely sensational. And as we come towards the end of the first half, what an important goal that could be for Wolfsburg. Janina Minga's 5th goal of the season. And we just said that they needed to keep in touch with Bayern Munich. And what a time and what a goal. Wolfsburg 1, Union Berlin 1. My goodness, what a strike from Janina Minga. So let's catch our breath after that sensational finish. With Wolfsburg over a free kick here. We've now played over the allocated injury time, and I wouldn't be surprised if our referee blows the whistle any second now, with Huth on the ball. Lindland exchanging passes with Huth. Maybe there's time for one more opportunity, but that one should go out for a goal kick to Union Berlin. And there is the half-time whistle. What a fantastic end to the first half here at the Outstadion in Wolfsburg. Union Berlin taking the lead, a shock lead, after a mix-up between Steiner Johannes and Guro Bergsvand, which presented the opportunity for Hannah Erlings to just slot the ball into an empty net. And then literally, right at the end of the first half, an absolute stunner from Janina Minga to make the score 1-1. Join us again for the second half here at the Outstadion. It's Wolfsburg 1, Union Berlin 1.
Welcome back, everybody. We're all set for the second half here at the Stadion, and it's beautifully poised between Wolfsburg and Union Berlin. If you're just joining us, it was the visitors who struck first. Hannah Erlings capitalising on a costly error from Guru Bergsvand to silence the home crowd and spark scenes of celebration amongst the travelling support. But just when it looked like Union would carry that advantage into the break, Wolfsburg produced a moment of real quality from that lady there, Janina Minga, with a stunning volley, a goal worthy of any occasion, leaving Nadine Bull in the Union Berlin goal with absolutely no chance. So 1-1, the balance is there for both sides. So it's all set for a fascinating second half in this Google Pixel Frauen Bundesliga encounter. Wolfsburg immediately on the attack, down the left-hand side with levels. Here's Bergsvand. Weidemeyer for Wolfsburg, playing in Bielda, just in front of the dugouts. Here's Huth. Now finding herself in her more natural position, down the right-hand side. She comes in field and plays in Bergsvand. And it looks like Huth will play more in central midfield. Here's Bielda. She nips that one forward for Cora Sakai. And Steuerwald is over that one for Union Berlin, and that one will go out for a Union Berlin throw-in after the ball nipped off Cora Sakai. Steinert over the throw-in, had an excellent first half for Union Berlin at left back. Here's Pedemors for Wolfsburg. She's carefully marshalled. Sakai coming back to Pujols. Bergsvand. It's excellent play in the centre of the park by Union Berlin. Brilliant play by Tanya Pavelek. That one's been broken up by Wolfsburg, and Sakai playing in Annie Lindland. And again, Leah Kamba is on hand to break that one up, and that'll go out for a throw-in to Wolfsburg. Deep inside Union Berlin's half. Here's Lindland, the 19-year-old. Just a reminder that she's making her first start for Wolfsburg today. Here's Pedemors, getting inside the box, nipping that one across the 18-yard box. But Union Berlin are able to clear. And Anna Weiss showing plenty of composure on the ball in the right-back position for Union Berlin. Here's Steinert coming in field, getting past Cora Sakai. Sakai doing her best to make life difficult. Erlings, the goal scorer, playing in Leah Kamba. And that will be a foul. Halfway through Wolfsburg's half. So here's an opportunity for the Union Berlin to throw one into the 18-yard box if they so wish. And again, very much like all their set pieces, Lisa Heisler, the skipper, is over it. Hannah Erlings is also over it. Let's see if they do the same movement as before, leaving it to Erlings. She clips it into the 18-yard box, but Bergsvand's over that one, as is Levels. Pujols. Now here's Sakai. She lets that one run out for what should be a Union Berlin throw-in. No, our officials decided that was a home throw-in. So Levels takes it for Wolfsburg. Quickly closed down by Eileen Campbell. Kamba. Ball breaks nicely to Anna Weiss. Here's Steuerwald. She comes out to the left-hand side to Judith Steinert. But that one was just behind Heisler. And Wolfsburg are able to break that one up. And Tia Bielda will gather the ball. She's now got plenty of time and plenty of room.
Bergsvand to Weidemeyer. This time Weidemeyer's going to go long. She does. But that one's been cut out very quickly by Steuerwald. Here's Minga. Here's Eileen Campbell if she can get her footing right. And Wolfsburg are able to clear through Janina Minga. Tysiak is over that one very quickly. The 26-year-old centre-back. He's only been with the club since January. She joined from West Ham. She's featured in all Union Berlin's games since the turn of the year, the Belgium international. But here they are, down the left-hand side. Erlings exchanging passes with Steinhardt. Cora Sakai finding herself very, very deep inside Wolfsburg's half, right down in the right-back position. And she does really well and forces Union Berlin to put that one out for a goal kick to Wolfsburg. So plenty for Eileen Poser, no doubt, to think about at half-time, after taking the lead. She asked for plenty of determination ahead of this game, and I think she's getting that in abundance from her team today. Here's Sakai, looking for options. She plays in Minga. Minga's got Pujols on the left-hand side. She decides to play Levels in. Here's Pujols, exchanging passes with Levels, but that's asking far too much of Levels. But that one goes out for a throw-in to Wolfsburg. Tysiak taking no risks, putting the ball out of play. Here's Bergsvand, playing in Weidemeyer, inside the centre circle. She goes forward to Huth. That's a nice touch to Pedemors, getting it back from Pedemors. Huth, will she let fly? Sure, she decides to play in Pujols. Levels, I beg your pardon, she comes in field and is unable to control the ball, and once again Union Berlin are able to clear. That's a good ball forward to Heisler. She's unable to find a colleague, and that one gets broken up again. Here's Pedemors. She's going to have a go here, and that one's gone just wide of Nadine Bull's left-hand side. Good intent from Ella Pedemors. Head up, not afraid to have a goal, but that one in the end goes well wide. And there's a goal kick to Union Berlin. Berlin going forward. Janina Minga is taking care of that one, patrolling just inside the centre circle. She goes all the way back to Steiner Johannes. Here's Bergsvand, playing in Weidemeyer. Bielda. Sakai doing her best. And the referee decides nothing wrong there and allows that to go unpunished. Again, Sakai showing excellent defensive duties and is able to get a foot in at the most important stage. Here's Huth. Going back to Bielda, and that should be a foul, and it is. Hannah Erlings, guilty of taking down Tia Bielda. Just catching her left ankle, definitely a foul. It's only her 8th appearance for Union Berlin today. Hannah Erlings, the 23-year-old. 45 Belgium caps. She's put in a really good shift so far today for Union Berlin, who, as it stands, are currently 8th in the Google Pixel Frauen Bundesliga. Went above Cologne, currently now sitting on 29 points. Sakai for Wolfsburg, just in front of the dugouts. That's a good ball in field to Pedemors. She switches play brilliantly to Levels. She's got plenty of room now to get forward. She plays that one just a little bit behind Pujols, who had to check. And now Wolfsburg are forced to go back the way. And again, Union Berlin showing
excellent press. Very well organised Union Berlin, as you would expect from an Aileen Purser side. Back-to-back promotions, and they're very much competing in the top league here. Here's Erlings, faced by Sakai and Pujols. And Pujols clears up the line, but that one will go all the way through to Judith Steinhardt. Steuerwald. The referee allows play to go on. Here's an opportunity now for Heisler. She gets just in front. And that's easy enough for Steinar Johannes. Half an opportunity there for Lisa Heisler, the captain, the 27-year-old. Making her 70th appearance for Union Berlin today. Attempting to get the left foot shot away, but that was no problems at all for Steinar Johannes in the Wolfsburg goal. But it's the first opportunity of the second half. 55 minutes on the clock, still 1-1. Here's Huth to Bielda. She goes down the line for Sakai. Steuerwald comes across. She puts that one out for a throw-in to Wolfsburg. Steuerwald, as you would expect, and has done all game, always coming across and covering. So here's Bielda with the throw-in for Wolfsburg, deep inside Union Berlin's half. Here's Lindland. Gets a second opportunity at it. She gets a third opportunity at it. But this time she's put the ball straight into touch, and that'll be a throw-in to Union Berlin. And now we can see some changes. So Guru Bergsvand is coming off. Unfortunately, making that mistake which led to the opening goal. And on comes Vivian Enderman. Lineth Berenstein, the goal scorer, is also on. Camilla Kuva coming on for Bergsvand. And as well as that impressive win against Lyon in the Champions League, there was further good news for the She-Wolves this week. Germany international Camilla Kuva, who has just come on, has extended her contract until the 30th of June 2028. 22 years old now. She joined the She-Wolves from Eintracht Frankfurt in 2023. Struggled for any competitive appearances in her first 2 seasons due to injury, but she's had an excellent season so far. Got a call up to the Germany national team as well. 29 appearances to date, extending her contract until 2028. So here's Bielda for Wolfsburg. Here's Sakai. Here is Kuva, getting her an early touch of the ball, but that one's loose from Janina Minga. And she's closed down very quickly. Now here's a chance for Heisler. Is she going to have a go? She is. But that one goes well over the bar. She had runners to her left and she had runners to her right, but she opted to have a go from 20 yards, and that one goes well over the bar. And that'll be her last contribution to the game. Handing over the skipper's armband. And Lisa Heisler goes off after an hour played. And Nelly Baureisen comes on. Still looking for her first start for Union Berlin, and still looking for her first goal this season as well. The 21-year-old striker. So plenty of changes at the beginning of the second half. Half an hour to go, still 1-1. Here's Berenstein.
Huth picking the ball up, driving. Oh, nearly a good ball forward. Here's Campbell. Steinhardt playing it in Erlings. The referee will have to stop play there. She decides it's a foul, and Wolfsburg take it quickly to Sakai. Faced by Steuerwald. She comes in field, that's good feet. She's got options to the left-hand side. Here's Enderman. Pujols. Here's Enderman again. Minga. That goes deep to Berenstein. Sakai gets a touch on that one. Here's Tia Bielda. And that one hits off the foot of Erlings, and that'll go out for a corner kick to Wolfsburg with an hour played. So Pujols coming all the way over. She's got Svenja Huth for company if she wants it. She delivers right on top of the 6-yard box. Union Berlin are able to clear that one. Campbell chasing it down. Here's Erlings looking to get the ball forward quickly, but Tia Bielda is on hand for Wolfsburg. She plays in Weidemeyer. Here's Berenstein. And that one's been cleared again by Steuerwald. Oh, that's a bad one, and that has gone all the way through. And that's an absolute disaster for Wolfsburg. And again, out of absolutely nothing, Union Berlin take the lead. 61 minutes gone. Wolfsburg 1, Union Berlin 2. And Camilla Kuva, who we've just been talking about, who's only just come onto the field of play, with a terrible back pass. And that one's gone all the way in. And oh dear, that's a terrible own goal. And now Wolfsburg, after getting back into this game and closing the gap on Bayern Munich, find themselves behind again after a dreadful mistake from Camilla Kuva. Well, we've not just seen one bad mistake, we've now seen 2 awful mistakes, which have led to 2 Union Berlin goals here in the Stadion. Oh, and Steiner Johannes only just about getting rid of that one to Bielda. So Wolfsburg will need to dust themselves down again, and very much like the first half, we'll be looking for a very quick response to get into this one. And very much like Guru Bergsvan in the first half, Camilla Kuva will not, she shouldn't let that one affect her. Just get on with the game. Here's Huth, chasing this one down. She's got the legs to get there. She does really well. And again, absolutely brilliant defending by Union Berlin. Lineth Berenstein was on hand. Here's Enderman. Now here's Pujols, just outside the 18-yard box, looking for the quick response. Here's opportunity for Sakai. She doesn't get a hold of that one. And that should go out for a throw in to Wolfsburg. So Wolfsburg with the perfect response, looking to get back into this one. Making life difficult. Good turn from Sakai. Plays Bielda back in. She's got options in front of her. Huth with the run, and that should be seen out of play, and it is by Leah Kamba. So Wolfsburg just turning it up slightly. Looking for a quick response. Sakai. Kuva trying to play in Huth, but here's Leah Kamba. So comfortable on the ball, the 20-year-old.
who's only just joined Union Berlin from Swiss side Basel back in January. 5 caps for Switzerland so far. And she's put in an excellent showing today. Here's Amber Teisak, here's Steuerwald. Trying to pick out Erlings, a bit of a heavy touch, and that'll go out for a throw-in to Wolfsburg, just in front of Stefan Lerch's dugout. Tia Bielda over it, 65 minutes gone. Wolfsburg 1, Union Berlin 2. Here's Teisak, opting to go back to Nadine Bull, closed down by Berenstein. And that's well played from Steuerwald. And again, excellent play from Steinhardt down this left-hand side. And there's a foot chase with Kuva, and Kuva's got too much of that. Goes it back to Steiner Johannes. And now Wolfsburg looking to mount an attack of their own through Svenja Huth. She comes out left to Enderman, Vivian Enderman, the second half substitute. It's a good ball to Sakai, but it's a heavy touch. And that one is easily cleared by Union Berlin. There's Steinhardt. There's our goal scorer. Campbell couldn't get a hold of that one, and it's broken up play, and Wolfsburg back in possession of the football. There's a late foul, late push, and that one will also draw the yellow card. Tanja Pavelek, watch. Oh, she had a little nibble there at Ella Pedamores, didn't she? And quite rightly goes into the referee's book. So Bielda now going off for Wolfsburg. And Saraya Linder comes on into the right back position. So that's a straight swap. So that's 4 changes already for Wolfsburg as they look to get back into this one. And there's again another look at that dreadful mistake from Camilla Kuva. Completely mishit that back pass, and it went all the way into an empty net with Steiner Johannes chasing it down. And don't forget that Wolfsburg have a hugely important game coming up this Thursday in France against Lyon in the return leg of that UEFA Women's Champions League quarter-final. Slender 1-goal lead, looking to get to the semi-finals. And then on Sunday they have the semi-finals of the DFB Pokal Cup against Carl Zeiss Jena. And here's Enderman making tracks into the 18-yard box. She lets fly, and that's no problems for Nadine Bull in the Union Berlin goal. But good intent from Vivian Enderman. Not quite getting a hold of the shot as she would have wanted to. You can see what she's trying to do. She's just trying to bend it, but not getting enough purpose on the ball. And that's easily gathered by Nadine Bull. Here's Kurva. This time getting her back pass right. Here's Saraya Linda with the first touch of the ball since coming on. Enderman. That's a good tackle. Oh, I thought Cora Sakai was going to get away with that one. Looked like she nipped the ball just in front. Let's watch it again. Oh, I think she wins the ball first. But Tanja Pavelek goes down under the challenge, and our referee decided that was a foul for Union Berlin. So Amber Teisak over it for Union. Halfway through their own half. 20 minutes to go. Still leading by 2-1.
A little bit of rinse and repeat at the moment from Wolfsburg. Pedimors this time, guilty of the foul on Tanja Pavelek, who's been seeing plenty of attention from the Wolfsburg counterparts this second half. Tasayek over it again. Looks like there's a problem here for Steinhardt. She's going to need some treatment. Union Berlin are one of the great modern stories in German football. A club built not on wealth but on community. They're fan-owned, fan-driven, and they're fiercely independent in spirit as well. It is a rarity at this level to be fan-owned. And they are most definitely one of the best supported clubs in Germany, and by some measure ranked among the top 4 supported teams across Europe. It's a fan base defined by loyalty, noise, and unwavering belief. So it doesn't look like Steinhardt is going to be able to carry on here. So Janina Minga just gathering her teammates here, asking for a little bit more. So let's just confirm the substitution for you. It's a double substitution. So Fatma Sakar is coming on. 27-year-old from Turkey. And Eileen Campbell is coming off now. And she's going to be replaced by number 27, Jenny Hip. The 28-year-old. Missed last week's game against Werder Bremen. It's her 13th appearance today, just the 1 goal for Union Berlin. And that free kick's gone all the way through to Steiner Johannes. Here's Weidemeyer trying to get the ball forward to Sakai, and that one's been marshalled, and that will go out for a Wolfsburg throw-in just inside Union Berlin's half. And that's a good exchange of passes there. Sophia Weidemeyer getting forward. That's a good ball inside the 18-yard box, but Soraya Linda is over that one. Could that one break? Here's Weidemeyer again. Plays the ball in, and that's really well defended by Weidemeyer. And here's Sakai for Wolfsburg, going forward to Beerenstein. She's unable to control that. This is a good spell of pressure from Union Berlin. And here's Pedimors for Wolfsburg, taking control of everything. Playing in Pujols, and she goes back to Kuva. Kuva playing in Linda. She does really well, and that should be a foul to Wolfsburg. It is. And Sakai will have to bring that one back, trying to steal a few yards. Linda switching play to Pujols. Enderman coming in field. Camilla Kuva offering herself. Here's Cora Sakai hugging the touchline. Weidemeyer bringing in Minga into play. Camilla Kuva. It's a good exchange of passes, creating space for Wolfsburg down this left-hand side. But again,
Union Berlin, extremely compact in their defending. Here's Sakai. She needs to get the ball under control. She does at the second attempt, exchanging passes with Pedemors. Enderman. Puyol's trying to get on the end of this one, and that one should go out for a throw-in to the home side, and it does. I beg your pardon. Referee adjudging that one to have gone out for a Union Berlin throw-in. Not had too far to travel for today's game. The loyal Union Berlin fans, just over an hour from the capital. Here's Kuva. But that one's been broken up, and here's an opportunity now for Wolfsburg. If she looks in field, she's got earrings inside the 18-yard box. She's unable to pick her out, and that one should deflect away for a corner kick to Union Berlin. Union Berlin on the break. And if she just got her head up, she would have seen Leah Kamba. If she would have seen Hannah Erlings all alone inside the 18-yard box, but she was unable to distribute the pass, and eventually it goes out for a Union Berlin corner kick, which is their first of the second half. It's Hannah Erlings over it. She goes deep to the far post. That one's up for grabs. Berenstein puts it out for a corner kick on the other side. Quarter of an hour gone. Union Berlin looking to extend their lead. Wolfsburg looking to get back into this game. Pavelek this time coming across to the opposite side to take this corner for Union Berlin. You don't forget, they've come into this one in good form, undefeated in 4. Can they make it 5 undefeated? That one goes out for another corner to Union. Huth is in a rush. Pavelek again with a second opportunity to deliver. This time she goes a little bit deeper, right on top, and that one's gone all the way through, and it's gone in for a third to Union Berlin. In the corresponding fixture, we saw Antonio Halverkamps score direct from a corner. This time, we've seen Pavelek score direct from a corner. And now plenty for Stefan Lech to think about as he finds himself, his team now 3-1 down. Any touches on that one? I don't think so. And that one looks to have gone all the way through. And Steiner Johannes did nothing about it in the Wolfsburg goal. Is there a touch there? I can't see any touches, and I think that one's gone all the way in for a goal. Let's see who's adjudged to have scored that goal. That's quite remarkable. In the corresponding fixture, we saw a goal direct from a corner kick, and now we've seen it again. Yeah, Tanja Pavelek. She's been credited with the goal. It's her first of the season. And now Union Berlin, 3 goals to the good against Wolfsburg. What an incredible turn of events with 12 minutes to go in this game. And now Wolfsburg with it all to do. Here's Minga for Wolfsburg, playing in Pedemors inside the centre circle. Here's Weidemeyer. She goes infield to Pedemors, but she's closed down very quickly by 3 Union Berlin players. And now Union Berlin can get forward here. And that's a good ball forward. But Kuva should be able to take care of that one, and she does. And that one goes out for a throw-in to Union Berlin. Bau rides in a foot chase with Camilla Kuva. Kuva had too much.
And here's another substitution for Wolfsburg. Sakura Sakai going off. And we'll confirm who's just come on in just a moment for you. And it's Smilla Valletto who has come on, number 14 for Wolfsburg. With the clock ticking down with just 10 minutes to go. Wolfsburg need to quickly try and make something happen to get back into this game. Otherwise, they're going to find themselves after this game a huge 14 points behind the leaders and the reigning champions Bayern Munich. It's a goal kick to Wolfsburg. Here's Enderman. Beg your pardon, Weidemeyer. Here's Soraya Linder. Here's Camilla Kuva with plenty of room to get forward if she wants to. She's got Judith Puyos to her left-hand side. She nips the ball forward for Lineth Berenstein, but that one again has been taken care of by Union Berlin. Here's Anna Weiss. Erling's making the run, but Weiss didn't quite get that one right, and that one's gone all the way through to Steiner Johannes in the Wolfsburg goal. Here's Janina Minga for Wolfsburg. Linder. That's a nice ball forward. Kuva playing further up front now for Wolfsburg. Have Wolfsburg gone 3 to the back? It looks like they have. And Camilla Kuva has pushed further forward. She wins the corner kick for the home side. And if they want to try and get anything out of this game, they need to make something happen from this set piece. 9 minutes to go. And Nadine Bull in the Union Berlin goal has gone down and is looking for treatment. Let's see if we can see anything from this replay. Just looks totally innocuous. So as I said, Union Berlin have come into this game in such good form. 4 undefeated, statement win last week against Werder Bremen. Prior to that, they drew 2-2 at Leipzig, beat Cologne 2-1, and then they shared the points in a 1-1 draw with Freiburg. So Bull is fine to carry on. And let's see what Wolfsburg can make of this corner kick. Camilla Kuva looking for the ball to the front post. And Bull's missed that one. And that one somehow has been deflected wide for a corner kick. So Bull unable to take a hold of it. Cleared off the line, and then an absolutely incredible stop right on the goal line from Janina Minga on the volley again from Nell Baureisen. Union Berlin putting their bodies on the line here. Another corner. That one's been headed in. And Camilla Kuva has made up for her mistake, and that brings the deficit back to 1. Wolfsburg 2, Union Berlin 3. 7 minutes to go for the She-Wolves to get back into this game. Excellent delivery from the corner. Kuva peels off her marker, and she gets the all-important header, and Nadine Bull could do nothing about that. And that one's gone in. What a finish we have here at the Outstadion. The second goal of the season. And now plenty for Aileen Puza, the Union Berlin head coach, to think about. There's 6 minutes to go in this game. Can Union Berlin hang on for what will be a very famous victory, which will be their first ever against Wolfsburg? Or can the She-Wolves get themselves back into this game? What a game we've seen here in the Outstadion in Wolfsburg.
Wolfsburg going long to Kurva. Trying to knock it down for Berenstein. And Valletta there has adjudged to have fouled. Leah Kamba, and that'll be a free kick to Union Berlin, just inside Wolfsburg's half here. And let's see if they can make something count from the set piece. Not throwing too many bodies forward at the moment. Erling's just going to put this one in. She delivers it into the 18-yard box. That's not a bad ball. And that one's gone well wide. And that'll be a goal kick to Wolfsburg. 5 minutes to go now. There's Wolfsburg's next 4 games for you. Don't forget, they've got the Champions League on Thursday, then the DFB Pokal Cup semi-final before they go to Frankfurt, at home to Leipzig. Away to Freiburg as well in there. So some huge games coming up for Wolfsburg. And there's a foot chase. Oh, and that's really well defended. Oh, and that should be a foul. And I've got a feeling Steiner Johannes is going to see a red card for that. And she does. So Steiner Johannes, the Wolfsburg goalkeeper, with 4 minutes to go, has now been sent off, which means Wolfsburg are now down to 10 players. And let's hope the Union Berlin player is okay, because that was some clash. Let's have a look here. Eyes on the ball the whole time. Oh, and she's been absolutely taken out. Now Baureisen. No question about the red card. And now Wolfsburg down to 10. Just coming up to 3 minutes to play. And it's Janina Minga who is going to go in goals for Wolfsburg. What drama we have here at the end of this game. And Wolfsburg's day is just going from bad to worse. 2 dreadful mistakes. A third goal direct from a corner. And now their goalkeeper sent off. So Janina Minga forced to wear Tufa Kovacic shirt. Martina Tufakovic, the goalkeeper on the bench today. She's going to play the last few minutes in goal. So Baureisen still receiving treatment after that clash with Steiner Johannes. She's back on her feet, thankfully, and I think she'll be okay to continue. But again, Union Berlin looking to make some late changes here, just to try and see this game out. We'll confirm the substitutions for you in just a moment. I think we're going to see this free kick first. Let's see what Union Berlin can do with this. Will they have a direct shot at goal? Jenny Hip over it, the 28-year-old midfielder. Only 1 goal so far this season. Is she going to have a go at it? She is, but she drives it well wide of Janina Minga's right-hand post. And now there'll be a stoppage just to confirm the substitutions for you. So 2 players coming on for Union Berlin right at the end of this game. Sophia Vaudauer is coming off. Dina Orschmann is coming on. And Weiss is coming off as well.
Anna Weiss, who has put on an excellent shift in this game. So just to confirm, Dina Orschmann has come on. And Anna Weiss goes off for Marina Georgieva, the 28-year-old former Austrian international. Plenty of experience coming onto the park now for Union Berlin to try and see this one out for what would be a famous victory, their first ever against Wolfsburg. Don't forget, it's the first ever competitive meeting at the Stadion between the two sides. And we've got 10 minutes of injury time. So plenty of time for Wolfsburg still to get back into this game. Saka over the throw-in. Deep inside Wolfsburg's half. Right down by the corner flag. She plays in Baureisen, who seems to have shaken herself off after that clash with Steiner Johannes. Here's Saka. She plays in field to Hip. Hip comes back to Samantha Steuerwald. That's one for Erlings to chase, and she gets there. You can see what she was trying to do. She was trying to win the corner kick, and Wolfsburg are unable to clear that one. Here's Erlings again. Maybe a little bit early to try and waste time with 10 minutes to go. 9 minutes now. And that one should go out for a Wolfsburg throw, and it does. That came off Erlings last. Weidemeyer comes across to take it. She's also in a rush. She goes long. Here's Huth. But that one's been broken up by Union Berlin. Saka winning the throw. Here's Hip. Steuerwald. She's played that one straight into touch, and that'll be a throw-in. What a game coming up for Union Berlin in the next one, at home to the reigning champions and the leaders Bayern. Then they visit Hamburg, Hoffenheim at home, and then Frankfurt away. So if they want to continue to move up the table, maybe look at a European place, which would be an astonishing finish. We've got some important games coming up. The referee's going to pull this one back. For a free kick to Wolfsburg, deep inside their own half. Still time for Wolfsburg to get back into this one. Janina Minga over it, now in goal. Weidemeyer coming out to Huth. It's Weidemeyer again. Here's Minga. It's a good touch from Kurva. To play in Vivian Enderman. That's a good turn from Enderman. Here's Kurva. She has a go at goal. And that one's easily been gathered by Nadine Bull in the Union Berlin goal. Good intent from Camilla Kurva. Good touch with the right foot, lets fly with the left. But that one's not going to trouble Nadine Bull too much inside the Union Berlin goal. You're going to need to be careful with that one. She throws it out to Pedamors. She switches play. She's got Huth down this right-hand side. It's a good first touch, but very quickly closed down by Sakar. Now here's Lynette Berenstein. Can she get her head up? She's got Huth motoring down the right-hand side, looking for a good delivery. It's an excellent ball in, and there it is! 3-3. Absolutely superb worked goal by Wolfsburg down the right-hand side. Superb ball in from Svenja Huth. And it's Judith Pujols at the back stick who bundles the ball into the back of the net.
to make it Wolfsburg 3, Union Berlin 3, and we've still got 5 minutes to go in this game. What an absolutely brilliant game this has been at the Stadion, and I don't think we're finished yet. Huge goal for Judith Pujols, the 21-year-old defender who joined from Barcelona last year. It's our first goal of the season, and how important could that goal be? Wolfsburg down to 10, getting back into the game. They've got less than 5 minutes to try and find a winner. Or could Union Berlin, out of nothing, get another one before the end of this game? That one's behind Lineth Berenstein, and that'll go out for a throw-in to Union Berlin, deep inside their own half. Saka over it, second half substitute. One's been flicked on, but there's nobody upfield for Union Berlin. Soraya Linder gets the ball forward. And that one's been cleared long by Steuerwald, but Janina Minga will pick that one up. 4 minutes to go. Here's Soraya Linder going long, looking for the run of Camilla Kuva. That's going to break for Berenstein. She's going to have a go. That one's deflected, and Union Berlin are easily able to clear that one. Baureisen making life slightly difficult. And here's Pedemors. That's a good ball out to Svenja Huth. What a fantastic ball in from Svenja Huth into the box. Former Germany international with over 100 caps. Here she is again. Here's Inderman. Comes in field. Oh, she tried to slip it through to Huth. Just a little bit too much on that, and that goes out for a throw-in. Stefan Lerch is not wasting any time here. Wants his team to get on with it. That's a good ball. Here's Huth inside the 18-yard box. But there's nobody on hand for Wolfsburg this time, and Union Berlin are able to clear. And the referee gives a foul to Wolfsburg just outside the 18-yard box. And Hannah Erlings will go into the book for that one. 3 minutes to go. Good position for Wolfsburg to make something count from the set piece. Are we going to have a grandstand finish here in the Stadion? Judith Pujols is over it. As is Svenja Huth. It's looking more like Pujols might have a go here. Is she going to dink it in, or is she going to have a go? She's going to have a go! And that's got too much purpose, and that one's gone out for a goal kick to Union Berlin. 2 minutes to go. Still 3-3. Just didn't get enough bend or curl on that one. Here's Bull with the goal kick for Union Berlin. That one's been flicked on, but Ella Pedemors is over that one, but she puts that one into touch. That'll be a throw-in to Union Berlin. Just inside Wolfsburg's half. Dina Orschmann is over the throw-in. She gets it back. Now she's trying to make room down this right-hand side. She's not going to get anything for that, though. And now here's Pedemors inside our own 18-yard box. Now she's motoring forward. She brings Weidemeyer into play. Looking for the long ball for Svenja Huth to chase. Saka is over that one. She puts that one into touch. A minute to go. Weidemeyer over the throw-in. In a good position for Wolfsburg here. Gets it back from Huth. And that one's gone out for another throw-in to Wolfsburg. Huth on the move. And that one will go out for a Union Berlin throw. Deep inside their own half. Saka over it. Only 30 seconds to go. Is there time for a dramatic finish?
So Ireland opted to keep that one in. But Union Berlin now on the move. And that's a good ball forward to Baureisen, who, she saw Janina Minga off her line. She had a go, but that wasn't going to trouble Janina Minga. Now here's a last opportunity for Wolfsburg with a free kick inside the centre circle to just throw the ball forward. We're now allocated over our time. What can Wolfsburg do with this free kick? Minga opts to go short to Weidemeyer. Here's Huth. She comes in field. That's a poor one, and that one's easily cleared. And there is your full-time whistle here in the Outstadion. What an absolutely sensational game between Wolfsburg and Union Berlin. Union Berlin taking the lead on 43 minutes, thanks to an awful mistake from Guro Bergsvand, which pronounced Hannah Erlings with an opportunity to put her team into the lead. Just 2 minutes later, Janina Minga. What a day she's had, with one of the goals of the season to make it 1-1. But then Camilla Kurva with a dreadful mistake and an own goal to make it 2-1 to Union. They then made it 3-1 direct from the corner kick. And then late drama, Kurva with a brilliant header from a corner kick. And then Pujols makes it 3-3, 5 minutes into injury time. What a game here we've had at the Outstadion. It means that Wolfsburg remain in second place, and for Union Berlin, they remain in 9th place. Final score here in Wolfsburg is Wolfsburg 3, Union Berlin 3.
Fill it, shut it, forget it. एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, हीरो के संग निकल पड़े तो मुश्किलों में दम नहीं। एक रास्ता है जिंदगी, खुशियों का सफर स्प्लेंडर प्लस। Fill it, shut it, forget it. सपनों को आसमान, आसमान को अंतरिक्ष छूते देखा है। हाँ, पिछले 60 सालों में मैंने देश को बनते देखा है। कमला पसंद, 60 सालों से अनोखा स्वाद। सुनील नारायण, ये ओवर बहुत ही क्रूशल है। मुझे तो ये लग रहा है शरीक का वक्त आ रहा है कि आप सुनील नारायण को लगा दीजिए एक तरफ से। अच्छा शॉट ये रोहित शर्मा का, फ्लैट ओवर, स्क्वायर कवर के ऊपर से छक्का। पिछले ओवर में 3 छक्का, इस ओवर की शुरुआत एक और छक्के के साथ। छक्कों की बारिश हो रही है गुरु, शक्तिशाली आदमी का शक्ति प्रदर्शन। और ये नीला समंदर, ठाठा मारता हुआ ये समंदर किस तरह से उन्माद और हर्षो उल्लास में डूब गया है। रोहित शर्मा की जो बैट स्पीड थी, पहला मारा मिड विकेट में और अब ये कवर में, गजब की फिटनेस जो है वो पूरी तरह से, मैंने पहले भी कहा था ये जो इंच गए हैं ना, छक्के मीटरों में लंबे होंगे। और छठी का दूध याद कराने के लिए तैयार है रोहित शर्मा, और छठे टाइटल के लिए भी तैयार है मुंबई, क्योंकि अगर ये चेज कर दी तो ये चेज विल बी रिमार्केबल, क्योंकि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। दिस विल बी द हाईएस्ट दैट मुंबई विल चेज। और उसकी नींव मुझे लगता है कि ये पहले 6 ओवरों में धरनी जरूरी थी। 3.2 ओवर 41, तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया है मुंबई ने। अगर आप को लगता है कि आपकी टीम एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है टाइटल को जीतने के लिए, तो फिर ये सही अवसर है वो साबित करने के लिए। ये हाईएस्ट रन चेज को अगर आपने मुकम्मल कर दिया तो ये दर्शाएगा कि इस टीम में बैलेंस बहुत ही अच्छा है। एक समय ऐसा लग रहा था कि हो सकता है 245, 250 आपको चेज करना पड़े, वहां पे रोक दिया है। 221 का ही लक्ष्य रखा है यहाँ पे केकेआर ने, और अब जो शुरुआत मिली है इसको और आगे ले जाने की जरूरत है। और केकेआर की तरफ से इस पार्टनरशिप को ब्रेक करना बहुत जरूरी। सुनील नारायण एक वायबल ऑप्शन है। सुनील नारायण ने रोहित शर्मा को आउट भी किया है और वो इफेक्टिव न्यू बॉल बॉलर है इन द पावर प्ले। वक्त के साथ कहां आ गए हैं बाबा। मुझे याद है 240 कई बार 50 ओवर में बनते थे और डिफेंड भी हो जाते थे। ये कौन से ग्रह से आए हैं ये खिलाड़ी। ये सुनील नारायण ने आउट किया था रोहित शर्मा को, और कई बार 8 बार आउट किया है। आईपीएल में 8 बार रोहित शर्मा को वापस भेजा है सुनील नारायण ने। एक बहुत ही फीजिबल ऑप्शन है ये यहाँ पे, क्योंकि साझेदारी को तोड़ना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं और आप बात कर रहे थे जब मध्यांत हुआ था, तो तब भी बात चल रही थी कि क्या स्पिनर के साथ शुरू कर सकते हो। इट वुड हैव बीन फैंटास्टिक कि अगर वरुण चक्रवर्ती या सुनील नारायण में से एक बंदा नए गेंद से इनको गेंद करता, शायद वो एक अच्छा मूव होता। क्योंकि यार साइकोलॉजिकली जब आपने किसी को आईपीएल में 8 बार आउट किया है तो आप उसे सेट होने का मौका क्यों दोगे। आपने देखा अभिषेक को किस तरह से वो ऑफ स्पिनर्स का एक साइकोलॉजिकल उन्हें एक हवा बन गया था उनके लिए, है ना। तो इस तरह से आपके लिए रोहित शर्मा, अब अगर स्पिनर आएगा भी तो एक सेट रोहित शर्मा उसके सामने खड़े होंगे। यू गॉट टू ईज द स्पिनर इनटू अ सिचुएशन जहां वो रफाटा गुरु जोर का थप्पड़ है, मतलब जिसे कहते हैं ना डिस्पैच्ड विद डिसडेन। बॉलर की साइकी, अब याद है वेस्ट इंडियन टूर 87 वाला 6 फुट 8 इंच वाले, ऐसा लगता है साइड स्क्रीन के ऊपर से गेंद आ रही है। हाइट वाइट का तो कोई देखता ही नहीं है, पता नहीं कौन से ग्रह से आए हैं यार ये बल्लेबाज। कमाल ही है इस रफ्तार से बैटिंग करनी ऐसे बॉलरों के खिलाफ। 4 ओवर समाप्त नहीं हुए, 50 लग गया। दिस इज द काइंड ऑफ स्टार्ट दैट मुंबई वांटेड, जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड फॉर। फ्लैट शॉट खेला था वहां पे रैन रिकल्टन ने, और इस सरफेस में पेस बॉलर के लिए कुछ नजर आया नहीं है। फर्स्ट हाफ में भी, यहाँ पे भी फिर से वो स्लो डिलीवरी। 4 के बाद 49। यार मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है,
याद रख, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है। बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। सही है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है। हाँ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ये जश्न है, जश्न का ये जश्न है। राष्ट्रीय इलायची, जश्न का जश्न। जब दिल में हो आगे बढ़ने का जज्बा, तो रास्तों की क्या जरूरत जो हमारी उड़ान को रोक सके। बीकेटी टायर्स, एलिवेट योर ड्राइव। आपको पता है चीनी, गुड़, हनी सब में कैलोरीज है। फिटनेस के लिए ट्राई शुगर फ्री ग्रीन। इसमें है 100% नेचुरल, 0 कैलोरी स्टीविया लीव्स की मिठास। शुगर फ्री ग्रीन। यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ी देर कर दी अजिंक्य रहाणे ने। अगर सरफेस ऐसा होता जहाँ पर पेस बॉलर्स को मदद मिल रही थी तो अलग बात है, पर इस सरफेस में पेस बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ हरापन दिखाने के लिए। उतना ज़्यादा जो मूवमेंट मिलना चाहिए था, जो बाउंस मिलनी चाहिए थी, वो आज नज़र आई नहीं है। और इसीलिए ये काम में भी 2 या 3 ओवर पहले ही कर लेना चाहिए था केकेआर को, स्पिनर को लगाना। 4 के बाद 49 हो गया स्कोर। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक क्योंकि अजिंक्य रहाणे नीड सम हेल्प। पहली बार, क्योंकि पहला मैच खास होता है, इसलिए कैडबरी डेयरी मिल्क के साथ स्टेडियम में एक खास सीट हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। हर लड़की हीरा है, तो हर लड़की के लिए हीरा क्यों नहीं? कैरेटलिन, a Tata product. Here we go on our way. We just say na 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 na. हर किसी के सफर में हम सफर होती है उनकी फैमिली। हर खुशहाल फैमिली का हम सफर होता है iQube, the TVS iQube, भारत का फेवरेट फैमिली ईवी। 4 ओवर के बाद 49। अजिंक्य रहाणे अब बाहर जा रहे हैं मैदान से। लगता है कि वो मसल क्रैम्प हो गया है शरीर। ये इसे कहते हैं क्रैम्प्स, ट्विंजिंग मसल। जब सॉल्ट वगैरह कम हो जाता है ना, मुंबई में वैसे भी ऐसा वातावरण है कि पसीना खड़े खड़े आता है। और जब आप एक पारी खेल के आते हो और उसके बाद भागदौड़ होती है, अगर आपकी डाइट सही नहीं, आप विराट कोहली को कभी गिरे हुए देखा है ऐसे, और ऐसे ट्विंजिंग मसल्स उन्हें देखे हैं? नहीं, क्योंकि वो डाइट ऐसी है ना। और ये जब क्रैम्प्स आते हैं ना सबा, तो ये इतनी जबरदस्त पेन है, बॉडी कहती है रुक जाओ, बॉडी कहती है रुक जाओ भाई, क्योंकि वो इतनी अनबेरेबल पेन है। बॉडी इंडिकेट करती है कि नहीं, आगे नहीं जा सकते। रिंकू सिंह के ऊपर दारोमदार आएगा। मुझे अभी भी याद है सिंगापुर में ऐसा ही माहौल था, 99 पे गिरा, उसके बाद उठा ही नहीं तो आदमी 1 रन तो लेने की कोशिश करता है ना, क्योंकि वो इतनी अनबेरेबल पेन है कि आपको लगता है यार मुझे बाहर जाना ठीक है, क्योंकि मैं एंटिसिपेट करूंगा भी तो भी बॉल की तरफ जा नहीं पाऊंगा। छक्का मारना था ना 99 पे। 1 रन के बारे में क्यों सोचे थे शहरी? ये टाटा आईपीएल फैन पार्क के, ये फैन पार्क का मैं तो बहुत बड़ा मुरीद हूँ, क्योंकि अलग अलग जगह पे ये फैन पार्क ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस बार आज के दिन रोहतक, कृष्णनगर, भोपाल, नागपुर और तुमकुरू एक और जगह है जहाँ पे, तुमकुरू एक और जगह है जहाँ पे फैन पार्क ऑर्गेनाइज किया गया है। और अजिंक्य रहाणे के जगह पे मनीष पांडे, एक्सीलेंट फील्डर, उनको एज ए रिप्ले, एज सब्स्टिट्यूट फील्डर मैदान में आना पड़ा। रिंकू सिंह कप्तानी करेंगे शरीफ, और ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी रिंकू के लिए। देखो गुरु, कल भी आपने देखा कि ईशान किशन के ऊपर जब कप्तानी आई, एक सूत का असर नहीं था, जूं तक नहीं रहेंगी गुरु, इतना बढ़िया था। 50 रन की पार्टनरशिप, नींव धर दी है भाई इमारत के लिए, जीत की इमारत के लिए नींव धर दी है रोहित शर्मा। रायन रिकल्टन ने रफ्तार के घोड़े पे सवार एकदम से, जिसे कहते हैं ना कि स्काई स्क्रेपर्स जैसी बिल्डिंग बन रही हैं हर ओवर में, और स्वागत किया है वरुण चक्रवर्ती का। कोई मन में संदेह नहीं, बिल्कुल श्योर फुटेड रोहित शर्मा, फिट एज अ फिडल रोहित शर्मा।
और फिर से अच्छा शॉट, ये उस वेरिएशन को बहुत ही अच्छे तरीके से पिक किया है यहाँ रोहित शर्मा ने। इसके पहले वाले शॉट पे भी डेलिब्रेट था वो कवर के ऊपर, इस बार सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मैक्सिमम। ऐसी मधुर आवाज है ना जब ये मिडल होती है ना, इससे बड़ा नशा कोई नहीं है। कभी कभी ना ये नींद में भी इंसान को सुनती है, जब छक्का वक्का लगता है ना ऐसा मिडल ऑफ द बैट। और आजकल तो आर्क्स आता है बैट में ना, आर्क आता है, तो गेंद हल्की सी थोड़ी नीचे भी आती है ना, वो भी मिडल में चली जाती है। ये छक्का तो शेयर टाइमिंग। कल विराट कोहली ने सिमिलर छक्का मारा था सीधा, जिस टाइमिंग ऐसे बल्ला रखा और सामने छक्का। और आज रोहित शर्मा ने कहीं ना कहीं तांडव नृत्य शुरू हो गया भाई, तहस नहस होना शुरू हो गया और वरुण चक्रवर्ती को लेने के देने पड़ गए हैं। कहीं ना कहीं राउंड द विकेट जब बॉलर आता है तो समझ लो पतली गली से निकलने को घूम रहा है। एक्सीलेंट शॉट, इस बार स्वीप किया है रोहित शर्मा ने, लाइन को पिक किया और उसके साथ साथ जगह कितनी अच्छी चुनी है। एक और चौका, मंजिल की ओर बुलेट ट्रेन की तरह चलते हुए रोहित शर्मा, क्या रफ्तार पकड़ी है मुंबई की गाड़ी ने। और अगर गेंदें देखें 15 गेंद में 34 पे पहुंच गए हैं। स्ट्राइक रेट जो है वो 200 के ऊपर का, और दूसरी तरफ 13 गेंद में 28 पे रायन रिकल्टन। दुनाली बंदूक है गुरु, दोनों तरफ से फायर हो रहे हैं। गन्स ऑफ नेवरॉन फायरिंग, बूम बूम। अपने होम क्राउड के सामने जिस शुरुआत की ज़रूरत थी वो देखने को मिल रही है रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन द्वारा। ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, पेस बॉलर्स के सामने भी रन्स बने और अब पहले ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती के 14 रन आ चुके हैं। दबाव है यहाँ पर, विश्व कप में भी उतना अच्छा प्रदर्शन रहा नहीं था वरुण चक्रवर्ती का। वहाँ पर फील्डर है मौजूद, 1 रन और 15 इस ओवर में, 5 के बाद 64। प्योरिटी और प्राइस में श्योर, 1 लीटर कैंपा श्योर सिर्फ 15 रुपए में। शुक्र है श्योर है। And for that reason, I'm out. यार इस दुनिया में एक जगह ऐसी है जहाँ आपको कोई जज नहीं करता, शेयर मार्केट। यहाँ आपकी मूंछ कितनी आई है कोई केयर नहीं करता, और एक दूसरे के अगेंस्ट ये मार्केट कंपेयर नहीं करता, क्योंकि आप जो भी हो, जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, ये मार्केट सबका है। तो SIP करो, इन्वेस्ट करो या IPO, डाउनलोड ग्रो। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। क्रिकेट लवर पढ़ती है न्यू वीवर मैच। Harvey, KKR versus Mumbai Indians. Give us a fun challenge to settle a debate. new AI mode in Google search. 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट इनका भी है। रायन रिकल्टन दूसरे छोर पे देख रहे हैं ये मजा। कार्तिक त्यागी की एंट्री, 15 विकेट है IPL में, और आसान नहीं है। आखिरी ओवर है पावर प्ले का और रोहित ने मंशा साफ कर रखी है, और उसी अंदाज में करेंगे इस ओवर की शुरुआत। अपिश है जरूर, लेकिन तपिश है इस बल्ले की जो एक बार फिर से महसूस कर रहा है ये बेहतरीन शहर। स्किल, पूरी तरह से वो स्किल वहां पर देखने को मिला है। चेंज ऑफ पेस था उस बॉल में, और किस तरह से थोड़ा सा रुके, इंतजार किया, और फिर बल्ले का जो डाउन स्विंग था वो गजब का था। सीधे बल्ले से खूबसूरत शॉट। अनिल कुंबले भी जुड़ते हुए हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में। 5 में 70, 150 रन अभी भी दूर है लक्ष्य, लेकिन पंच एक बार फिर से सजा दिया है इस ओपनिंग पार्टनरशिप ने। लगभग एक सिमिलर स्टोरी जो कोलकाता नाइट राइडर्स ने करने की कोशिश की थी पहली पारी में। 2 की मांग है, लीनर फिटर मीनर रोहित शर्मा के 2 कंप्लीट। अभी सुनील नारायण के ऊपर दबाव रहेगी। ये देखिए स्लॉट में था, लेकिन थोड़ा दूर वेट करना पड़ा। सिर्फ टाइमिंग रोहित शर्मा द्वारा।
बहुत बढ़िया पारी खेल रहे हैं यहाँ पे रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन। ऐसी रफ्तार से रन चाहिए मुंबई इंडियंस को। यहाँ पर थोड़ा सा चैलेंज रहेगा रिंकू सिंह के ऊपर भी कि किस तरह से गेंदबाजों को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अनुभव नहीं है उनको। अजिंक्य रहाणे फिलहाल अंदर गए हैं क्योंकि क्रैम्प्स आए। क्या सुनील नारायण को छठा ओवर आप दे सकते थे? क्योंकि जब दो सेट बल्लेबाज रहते हैं वहां पर छठे ओवर में ये बातचीत अक्सर होती है कि आप मैक्सिमाइज करें। एक या दो विकेट चले भी गए तो कोई बात नहीं, और उसमें अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती थी। तो क्या त्यागी को पावर प्ले के बाद गेंदबाजी लाते तो बेहतर होता? रोहित शर्मा ने अपना विंटेज अवतार निकाल दिया है। 21 गेंदों में अर्शदक की दहलीज पे रोहित। एक और असॉल्ट कार्तिक त्यागी पे। पावर प्ले में अभी भी 2 गेंदें बाकी हैं। छोटी गेंद और आसान नहीं होता रोहित शर्मा को। जब आप छोटी गेंद डालते हैं तो फिर बचने का रोहित की क्लास दिखती हुई आज। नहीं, सिंगल का इंतजार करना पड़ेगा। कैमरन ग्रीन की तरफ बड़ी तेजी से गई वो गेंद। ब्लॉक होल ढूंढने की कोशिश कार्तिक त्यागी की। कार्तिक त्यागी के पास ये काबिलियत है 140 के ऊपर की स्पीड से गेंदबाजी करने की। खेल भले ही अनिश्चित हो, लेकिन अपनी सुरक्षा निश्चित होनी चाहिए। जश्न को उसी भरोसे के साथ जारी रखें जैसे फैन बॉक्स देता है। टाटा एआईजी के साथ हर पल के लिए आप कवर्ड हैं, क्योंकि टाटा एआईजी है तो भरोसा है। भरोसे की पराकाष्ठा रहे रोहित शर्मा। नीली जर्सी चाहे भारत की हो या मुंबई इंडियंस की। आखिरी गेंद पावर प्ले की। कार्तिक त्यागी के पहले ओवर की 5 गेंदों में 14 बटोर लिए, 2 मैक्सिमम जड़ दिए। बंदा लोकल है, लेकिन बल्ला हमेशा की तरह आज भी वोकल है। मैक्सिमम सिटी में एक और अर्धशतक पेश है रोहित शर्मा का। इनके नाम का यहां पे स्टैंड है और स्टैंड एंड डिलीवर कर दिया एक बार फिर से अपनी फेवरेट टीम के लिए। जिस टीम के खिलाफ कभी अपना पहला शतक जड़ा था इसी स्टेज पे, उसी के खिलाफ इस सीजन का किया है खूबसूरत आगाज। रोहित का विंटेज अंदाज। टाटा आईपीएल के इतिहास में उनका सबसे तेज अर्धशतक। वक्त एक सीएटा है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का मुंबई में। ये इस डेकोर के लिए एसी आ गया और अब बिना पूछे एसी भी खरीद लिया। हेलो लॉयड, टर्न ऑन एसी। लॉयड, टेल हिम दिस गोस परफेक्टली विद द डेकोर। तो मूड लाइटिंग हो जाए। India's first designer AC with mood lighting and powerful cooling. The new Skoda Kushaq. Easy to love. Skoda. Secretary. Haripur Towers meeting topic 1, new plumber. Approved. Table fan for watchman. Reject. Carrom board. Approved. Snacks. Approved. नया पार्ट लगेगा सर। ये लो पैसे। Approved. जल्दी है तो ना भी UPI. Fast, very fast. Oh dear, that changes everything. इनके पॉइंट्स कितने हैं? अरे वो नेट रन रेट क्या है? अरे वो तो लेकिन तुम्हारा फोन है या खिलौना यार? लाओ। वो फोन किसी काम का नहीं जिसमें क्रिक बज नहीं। क्रिकेट का असली ऐप क्रिक बज डाउनलोड नाउ। बीवी को चाइनीज चाहिए, बच्चों को इटालियन, और है सिर्फ बैंगन। बस गूगल जेमिनी करो, आगे बढ़ो। Suggest easy to cook Chinese and Italian dishes that I can make with this. You could make a Chinese garlic and soy eggplant and an Italian pasta alla norma. Gemini तो बड़े काम का है। Best to ideate with Google Gemini. Try now. ये जश्न है, जश्न का ये जश्न है। राशि इलायची जश्न का जश्न। और पेंट से शानदार वारंटी। ड्यूलक्स। डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि पेंट ज्यादा शानदार है या उसकी वारंटी।
talk to you. I really wanna know you. I really wanna talk to you. I really wanna को भी बहुत आसानी से पार कर दिया है। 11 साल पहले वो किया था रोहित शर्मा ने। कल विराट कोहली का अर्धशतक देखा, आज रोहित शर्मा का अर्धशतक उनके फेवरेट ग्राउंड पे पेश है और इसीलिए ये सीजन विशेष है। जे नेक्स्ट टेस्ट लेगा बेस्ट का, लेकिन बेस्ट ने लकीर आगे खींच दी है। सीए टायर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट समाप्त होता हुआ मैक्सिमम सिटी में और मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि लक्ष्य सबसे बड़ा चेस करना पड़ेगा मुंबई इंडियंस को उनके इतिहास में। इससे बेहतर फाउंडेशन क्या हो सकती थी। लेकिन संजय दूसरी तरफ वरुण चक्रवर्ती का पहला ओवर 16 रन लेके आया, 15 रन माफ कीजिए। तो सुनील नारायण की एंट्री अब हुई है। रोहित शर्मा के खिलाफ नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन फिलहाल रायन रिकल्टन होंगे स्ट्राइक पे। ये 4 ओवर बहुत निर्णायक होने वाले हैं। सुनील नारायण और ये बैटल बहुत इंटरेस्टिंग होगी यहां से। और रोहित को थोड़ी सी परेशानी हुई है सुनील नारायण के खिलाफ, मगर आज तेज गेंदबाजी के खिलाफ वो एक जबरदस्त अंदाज देखने को मिला है। पहले हाथ खोले, ये मुझे लगता है शॉट ऑफ द मैच सो फार फ्रॉम रोहित शर्मा, बैकफुट के ऊपर कवर के हिसाब से, और उसके बाद निरंतर एक के बाद एक बेहतरीन शॉट्स खेलते हुए एक बड़े लक्ष्य की तरफ बड़ी बुनियाद दे दी है रोहित ने। और फिर सम्मान भी, जानते हैं कि सुनील नारायण ने तंग किया है उन्हें, कि आज उनके खिलाफ थोड़ा बैकफुट के ऊपर भी खेलेंगे, क्योंकि जब तक आप सुनील नारायण को सिर्फ ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते हैं तो फिर वहां दिक्कतें आती है। 10 बार आउट भी हुए हैं रोहित सुनील के खिलाफ। जिस तरीके से कोलकाता ने बुमराह की बॉलिंग को ना विकेट दिए, 34 रन 4 ओवर में मिला था, वैसे ही अगर मुंबई खेल जाते हैं तो फिर आसान बन जाएगा ये टारगेट। अब मुझे लगता है कि उस तरफ से वरुण चक्रवर्ती भी आएंगे। बढ़िया शॉट, रायन रिकल्टन, एक और छक्का। और रायन रिकल्टन और खासकर साउथ अफ्रीकन के खेमे से निकले हुए बल्लेबाज स्लॉक स्वीप के ऊपर काफी भरोसा जताते हैं। चहलकदमी करते नहीं है, मगर अपने आप को बैक करते हैं। अच्छी गेंदों को क्रीज में रह के स्वीप या स्लॉक स्वीप के ऊपर, स्पिनर्स के ऊपर दबदबा बनाने का। थोड़ी सी धीमी रफ्तार से डाली गई गेंद, और जिस तरह से अनिल ने भी कहा कि 25 या 30 रन यदि एक प्लान बना के चलते हैं तो फिर अन्य जो गेंदबाज है उनके ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से हावी हो सकते हैं मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज। सुनील नारायण का पहला ओवर 8 रन लेके आया, 7 में 88 मुंबई। खिलाड़ी उपटन फेस वॉश की खोज में नजर महंगे पर पड़ी और अब टैन रिमूवल पे, पर क्या ये ग्लो देगा? नहीं, कदम बढ़ते ही फुल कंफ्यूजन। इधर देखो सालिया, जॉय उपटन फेस वॉश, जो टैन हटाए फॉर द नेचुरल ग्लो। कंफ्यूज मत हो, बेस्ट लुक जॉय उपटन फेस वॉश। जॉय, ब्यूटीफुल बाय नेचर। ओए, इन्वेस्टिंग के लिए इंटेलिजेंट बनना है तो रूबिक्स क्यूब, जिगसॉ, सुडोकू, क्रॉसवर्ड। ओए, इन्वेस्टिंग के लिए तेरा ऐप इंटेलिजेंट होना चाहिए। ऐप? ट्रेडिंग सिग्नल, स्मार्ट डिस्कवरी, सिक्योर एग्जिट, आस्क एंजल। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. रोहित शर्मा ने समय के पहिए को पीछे की तरफ घुमाना फिर से शुरू कर दिया है। रिंकू सिंह कप्तानी करते हुए अजिंक्य रहाणे नहीं है। राउंड द विकेट वरुण। ये जो जरूरी काम था पावर प्ले में अच्छी नींव प्रदान करने का, वो कर दिया गया है। नीचे इतनी एक्सप्लोसिव फायर पावर मौजूद है मुंबई के लिए। तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, और इस सारा आईपीएल की कवरेज का आप अलग अलग भाषाओं में स्वाद ले सकते हैं। भोजपुरी, हरियाणवी, बांग्ला में देखिए मैच। जियो हॉटस्टार पे सेटिंग्स में जाइए और अपनी भाषा का कर लीजिए चुनाव।
इंटरेस्टिंग था, वरुण चक्रवर्ती को आड़े हाथों लिया रोहित शर्मा ने, तो रायन रिकल्टन ने वो स्लॉग स्वीप लगाया सुनील नारायण के खिलाफ। वही करने की कोशिश है इस बार रायन रिकल्टन की, फील्डर नीचे आते हुए, कैच होता तो गजब का होता, लेकिन रमनदीप ये पूरा नहीं कर पाएंगे। और जब वो गेंद हवा में गई, जिस तरह से रिएक्शन वहां पर था, बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं थे। बल्ले के निचले हिस्से में जरूर लगी, मगर काफी ऊपर गई गेंद और पहुंच ही नहीं पाया, हाथ भी नहीं लगा बॉल को, क्योंकि वो फुटवर्क वहां पर मौजूद नहीं था। रिंकू सिंह बिल्कुल भी खुश नहीं, जानते हैं अहमियत इस ब्रेक थ्रू की। कमाल के कैचेस पकड़े रमनदीप ने, तो उस लिहाज से बहुत डेंजरस होता, जैसे कि ये शॉट कोई चांस ही नहीं किसी फील्डर के पास। जब आप राउंड द स्टंप से बाहर डालते हैं तो फिर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खुल जाता है बल्लेबाज को। ये वैसे ही हुआ। ये देखिए ये कैच जो छूटी थी, समय था रमनदीप को, लेकिन शुरू में थोड़ा पिक नहीं कर पाए गेंद को। राउंड द विकेट से गेंदबाजी, मुझे लगता है गलती कर रहे हैं वहां पर वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती की सबसे बड़ी ताकत है ओवर द विकेट से आप स्टंप्स में डालें, क्योंकि जब राउंड द विकेट से डालते हैं तो फिर, क्योंकि राइट हैंड गेंदबाज अक्सर राउंड द विकेट से क्रीज के कोने से डालते हैं, तो बहुत बड़ा एंगल बन जाता है, और उस एंगल के साथ वो शॉट लगाया था कवर के ऊपर। रूम दिया, लेकिन रूम का फायदा नहीं मिला रायन रिकल्टन को। चर्चा करेंगे अगले ओवर में कैमरन ग्रीन द बॉलर की, क्योंकि 5 गेंदबाजी विकल्प अभी तक, वैभव, ब्लेसिंग मुजाराबानी, 2 स्पिनर्स वरुण और नारायण, और कार्तिक त्यागी का सिर्फ 1 ओवर जो 16 रन लेके आया। मिडिल ओवर्स का फेज जहां पे स्पिनर्स बहुत इफेक्टिव रहे थे केकेआर के। आखिरी गेंद पे सिंगल, 8 में 96, 12 के रन रेट से। And for that reason, I'm out. यार इस दुनिया में एक जगह ऐसी है जहां आपको कोई जज नहीं करता, शेयर मार्केट। यहाँ आपकी मूंछ कितनी आई है कोई केयर नहीं करता, और एक दूसरे के अगेंस्ट ये मार्केट कंपेयर नहीं करता, क्योंकि आप जो भी हो, जहां से भी हो, जैसे भी हो, ये मार्केट सबका है। तो SIP करो, इन्वेस्ट करो या IPO, डाउनलोड ग्रो। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेंस। नारायण मैक्सिमम रिजल्ट की मंशा से ये शॉट लगाया और मैक्सिमम ही आएगा, 100 के पार मुंबई जाएगा। और एक और बार स्लॉग स्वीप का इस्तेमाल, मगर ये स्लॉग स्वीप खेलते वक्त जो पिछला घुटना था वो जमीन के संपर्क में था नहीं, तो थोड़ा सा घसीटना पड़ा, इतनी ताकत थी नहीं उस शॉट में। वहां पर संपर्क हुआ जरूर, मगर बल्ले के निचले हिस्से में गेंद लगी, मगर फिर भी वो गेंद सीमा पार। सुनील नारायण भी तेजी से डालते हुए, आइए सुनते हैं डगआउट से। Someone who loved hitting sixes, there he is. I dare say he's still hitting sixes around the world. Karun Pollard, thanks for joining us. We had that strategic timeout. What was the discussion, KP, if you could, as soon as this ball is done? Because Ryan Rickleton has smashed another one of your good friend Sunil Narayan. KP, what's happening here? Sorry, one second. Yeah, the discussion was obviously their threat is going to be their spin attack, bowling both Narayan and Chakravarti in tandem. But the fact that we got off to a really, really good start, I think is not one where we take our foot off the pedal. We just continue that momentum, as you can see, and the guys are backing themselves, to play their shots. You've seen so many 1KD wickets, KP. There's 50 coming up for Rickleton in just 24. Is this as good a batting surface as any you've seen here? Yeah,
it just keeps getting better. I think this is the same wicket that they played the semi-final on, where India would have scored 250 plus, and they would have just defeated England by 7 runs. So you can see it's a great track for batting, and I think our bowlers did well in the end to restrict KKR for 220, giving us an opportunity to see if we can chase it down. Polly, how hard is it to bowl on these surfaces? Very, very hard. I'm happy that I didn't have that job when I used to play. But I think you have to be very skillful and understand, what's needed at any given time. Because when you look at it, if you're too full, you're going to go out of the park. If you're too short, you're going to go out of the park. So you got to get it right, but you got to build your over and use your skills in order to get in and get out of the over. Right, from one KP to another. Thanks, KP in the dugout, for joining us. Thank you for having me. Cheers. 2-6. 9 में 110 मुंबई इंडियंस। पहली बार, क्योंकि पहला मैच खास होता है, इसलिए कैडबरी डेयरी मिल्क के साथ स्टेडियम में एक खास सीट हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, a premium product from दिलबाग ग्रुप। जब दिल में हो आगे बढ़ने का जज्बा, तो रास्तों की क्या जरूरत जो हमारी उड़ान को रोक सके। BKT टायर्स, elevate your drive। ये बताओ कौन सा लगाओ? बस गूगल जेमिनी करो, आगे बढ़ो। Which pocket square goes best with this jacket? The white and black one looks quite sharp with the jacket. ये वाला। Dress to style with Google Gemini. Try now. और पेंट से शानदार वारंटी। ड्यूलक्स, डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि पेंट ज्यादा शानदार है या उसकी वारंटी। कार्तिक त्यागी के पास एक और अपॉर्चुनिटी। क्या कमाल की अपॉर्चुनिटी हार्दिक पांड्या की टीम के लिए। 219 सर्वाधिक लक्ष्य जो चेज किया है मुंबई ने 2021 में, 5 साल पहले 5 बार के चैंपियन CSK के खिलाफ। आज उसे तोड़ने का मौका। ये नो बॉल होगी। बच गए रोहित शर्मा एक्चुअली। चलिए अब ब्रायन रिकल्टन इसका पूरा फायदा उठाना चाहेंगे। कार्तिक त्यागी ने सीधे वैसे अपॉलॉजी इशू कर दी अपनी। सामने रोहित शर्मा है। यॉर्कर डालने की कोशिश यहां पे, बिल्कुल फुल टॉस, वेस्ट हाई, वेस्ट के ऊपर। ये नो बॉल, ऑलमोस्ट ग्लव पे लगा वो। टॉप ऑफ द बैट, थोड़ा पिंच हुआ होगा वहां पे। फ्री हिट। सेकंड के लिए लगा कि शायद थोड़े से उपचार की जरूरत पड़े, बट रोहित ने कहा नहीं, फ्री हिट है, चलिए पूरा फायदा उठाया जाए। फिजियो बाद में देखेंगे। रिकल्टन के पास मौका। करियर का, IPL करियर का फास्टेस्ट अर्धशतक जड़ चुके हैं। गेंद ये भी लगी है, लेकिन इस बार बेहतर गेंद थी। और जो फुल टॉस गया था वो गेंद की रफ्तार 147 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, और फिर उसके बाद जो अंतर है तकरीबन 25 किलोमीटर कम से डाली गई गेंद। तो बहुत बढ़िया तरीके से मिक्सअप कर रहा है कार्तिक, और ये उनके लिए कमबैक का मौका है कार्तिक त्यागी के लिए। और जो मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा अब पहले काफी क्रीज के कोने से डालते थे, अब सेंटर ऑफ द क्रीज से डाल रहे हैं, मगर वो रफ्तार अभी भी बरकरार है इनकी। हाथों में थी और हाथों से छिटक गई। मौका एक बार फिर से छूट गया है इस गेम पे अपनी पकड़ बनाने का। रायन रिकल्टन की अपॉर्चुनिटी आई और यूं ही चली गई। वैभव अरोरा वहां पे मौका था यहां पे KKR के लिए ब्रेक थ्रू का, लेकिन हाथ से निकल गया। वैभव अरोरा तैयार थे लेकिन छूट गई। अच्छी गेंद वहां पे कार्तिक त्यागी द्वारा। इमोशंस। टिंकू सिंह भी एक कप्तान की प्रतिमा की बिल्कुल कंपोज रहे।
लेकिन जानते हैं कि इस विकेट की कितनी अहमियत है। डायरेक्टेड की कोशिश है और यहाँ पे अतिरिक्त रन मिल सकता है। क्रीश रघुवंशी कीपिंग करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। रमनदीप थे उस मौके पे, थोड़ी देर पहले उनकी तरफ भी एक इसी तरह का मौका आया था, वो थोड़ा सा दूर गिरा। एंड रिकल्टन की पारी, उनके आईपीएल करियर का ये चौथा अर्धशतक। बहुत बड़ा सवाल था क्या क्विंटन डिकॉक, वो ट्राइड एंड ट्रस्टेड जोड़ी रोहित और डिकॉक की, लेकिन रिकल्टन को पहले मौका दिया गया संजय। पूरा फायदा भी उठाया क्योंकि वो भी शायद जानते होंगे कि उनको यदि शुरुआत करने का मौका मिला है तो ज़्यादा मौके मिल नहीं सकते, क्योंकि क्विंटन डिकॉक जैसा खिलाड़ी यदि बेंच के ऊपर बैठा हो। ये नजाकत है इस शॉट में, पहले ताकत थी तो यहां पर नजाकत। वो बॉल को बढ़िया तरीके से पिक किया, लेंथ काफी पीछे थी और दाहिने तरफ से पॉइंट के पास से वो निकाल दिया। बहुत खूबसूरत वो कट शॉट। पेस की इस्तेमाल की है वहां पे रोहित शर्मा, सिर्फ टाइमिंग और बिल्कुल वो गैप जो था शॉर्ट पॉइंट और डीप पॉइंट के बीच में। और इसी शोर के बाद की खामोशी। अंडर प्रेशर कार्तिक त्यागी, अंडर प्रेशर केकेआर से 2 बार जीते इस मैदान पे मुंबई इंडियंस के खिलाफ। पिछली बार जीते थे तो 12 साल का इंतजार समाप्त किया था। रिंकू सिंह के लिए ये बहुत बड़ा एग्जामिनेशन, जैसे कि कल ईशान किशन के लिए था। पारी उन्होंने अच्छी खेली बल्ले से, जैसे इन्होंने आज अपने बल्ले से। कैमरन ग्रीन पे भी निगाहें हैं। पिछले 8 मैचों में एक्चुअली जो इन्होंने खेले उसमें सिर्फ 7.1 ओवर डाले हैं। और ये एक समस्या रही है कि कैसे उनके वर्कलोड को मैनेज करके उन्हें गेंदबाज के रूप में यूज किया जा सकता है इस सीजन। बहुत मेहनत की है शेन वॉटसन के साथ। मुझे तो लग रहा है जरूरत आन पड़ी है एक बार फिर से, क्योंकि बहुत आसानी से रन कलेक्ट कर रहे हैं रायन और रोहित। फिलहाल 2 रन और 12 इस ओवर से 122 बिना किसी नुकसान, आधे ओवर समाप्त। ब्रो, इन्वेस्टिंग के लिए इंटेलिजेंट बनना है तो स्टॉक ट्यूटोरियल्स, मार्केट ट्रेनिंग, इन्फ्लुएंसर एडवाइस, एजुकेशनल वीडियोस। ब्रो, इन्वेस्टिंग के लिए तेरा ऐप इंटेलिजेंट होना चाहिए। ट्रेडिंग सिग्नल, स्मार्ट डिस्कवरी, सिक्योर एग्जिट, आस्क एंजल। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. दस में 122। मुंबई अपने लक्ष्य से 99 रन दूर है, यानी 100 से कम अब वो टारगेट। ओवर बचे हैं 10। रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन के अर्धशतक पूरे। वरुण चक्रवर्ती शुरू करते हुए अपना तीसरा ओवर 2 में 23 दिए। रोहित शर्मा ने बहुत बड़ा टेस्ट लिया है वरुण का। लगभग 300 के स्ट्राइक रेट से फिलहाल डील कर रहे हैं वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ। रायन रिकल्टन ने वो घुटना टेक के एक शॉट लगाया था इन्हीं पे। क्या उसी तरह से अटैक करते रहेंगे रायन रिकल्टन? लाइसेंस पूरा है, लाइसेंस टू थ्रिल। कमेंट्री बॉक्स में भी शरीफा का स्वागत। राउंड द विकेट ही आते हुए, अभी तो फिलहाल लेफ्ट हैंडर है स्ट्राइक पे, तो बनता है शायद। फिर से घुटना टेका है, फिर से रिजल्ट लगभग वही, डिस्टेंस उतना नहीं लेकिन रिजल्ट वही। बहुत ही निर्मम किस्म की बैटिंग हो रही है और अगर आप देखें ना, फील्ड पूरी तरह से फैल गई है, बॉडी लैंग्वेज दिख ही नहीं रही है। ऐसा लगता है कि जैसे सरेंडर हो गया है, ऐसा लगता है कि जैसे हार मान चुकी है ये टीम। और अगर आप देखें कोई ताली नहीं बजा रहा है, किसी ये ध्वस्त करते हैं इसी तरह से, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग, और ये तेज थी, जिस तरह की बैटिंग हुई है, कोई कंसल्टेशन नहीं चल रही, कहीं से ताड़ी नहीं आ रही।
एक तीर से दो निशाने साध रही है मुंबई की टीम, उस कगार पे है। एक तो वो 13 साल वाला जिंक्स, मुझे लगता है अनिल जब पहली बार आए थे तब वो शुरू हुआ था वो 13 साल वाला, और मुझे लगता है अब जब वापस आए कमेंट्री में तो वो टूटने वाला है। दूसरा, वो जिंक्स तो टूटेगा ही, इतिहास में जो कभी नहीं हुआ है, 200 220 कभी मुंबई ने चेज नहीं किए। मुझे लगता है जिस तरह से कल हुआ आरसीबी ने वो किया था, बिल्कुल एक्शन रिप्ले हो रहा है। वो पहले 6 ओवर में 80 लगे और फिर एक आध कैच भी छूटा है, और रोहित और रायन रिकल्टन इतिहास की कगार पे खड़ा कर दिया है मुंबई को यार। और शेरी, सही कहा आपने, जब मैं आया था मुंबई इंडियंस के साथ शुरुआत सही नहीं रही, लेकिन अंत बहुत बढ़िया रहा। ट्रॉफी लेके आए मुंबई इंडियंस। शेरीफा ने कहा कि एक अच्छी कहानी के बीच में सच नहीं आना चाहिए, तो पूरा सच नहीं बताया उन्होंने। थैंक यू अनिल भाई। 2013 में ट्रॉफी, 2015 में दूसरी बार चैंपियन बने। वेल डन मिस्टर कुंबले। जारी रहो अनिल, बताओ मुझे, मैं सुनना चाहता हूं गुरु, बता। नहीं, मैं खुद बोला कि ये आज मैं आया हूं ये जिंक्स तोड़ने के लिए। ये सही कहा आपने। आज लग रहा है कि वैसे होगा आज। लकी चार्म बन के आओगे आप, मतलब जब आए थे तो लाए थे, जब दोबारा आए तो जा रहा है। और ये तो गुरु सरपट भाग रहा है, मुंबई का घोड़ा जीत की तरफ। ओवर, और ये अरबी घोड़ा है गुरु, जिताने वाला। Character, the taste of success. The new Skoda Kushaq. Easy to love. Skoda. हर लड़की हीरा है, तो हर लड़की के लिए हीरा क्यों नहीं? कैरेट लेन, अ टाटा प्रोडक्ट। आपको पता है चीनी, गुड़, हनी सब में कैलोरीज है। फिटनेस के लिए ट्राई शुगर फ्री। कंधे और मजबूत करने पड़ेंगे। आगे भी बढ़े, पुल शॉट भी लगाया, दिलों को फिर से जीता, और मैच जीतने की तरफ एक और पुख्ता पुरजोर कदम बढ़ाया। बुलडोज कर रहे हैं, और आप रोहित शर्मा की फिटनेस दिख रही है, कोई थकान नहीं है। और अभी अनिल जिक्र कर रहे थे कि अगर पहले वाले रोहित शर्मा होते हैं तो कई बार इस टाइम पे आके थक के वो मतलब मार के आउट होके चले जाते हैं। देखिए किस तरह से कंपोज्ड आदमी है, और वो ये नहीं देख रहा है कि मेरे 60-70 बन गए हैं, वो ये देख रहा है कि गुरु मुझे 220 तक, जिस तरह से विराट कोहली ने कल कार्य संपन्न किया ना, उस मूड में है रोहित शर्मा। और इस मूड में, इस फॉर्म में मुझे नहीं लगता कोई रोक पाएगा। एक दरिया की तरह, लाइक अ रैम्पेंट रिवर, एक दरिया की तरह बह रहे हैं रोहित शर्मा। बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन अनिल तुम्हारा, कि ये फिटनेस ने बहुत जमीन आसमान का फर्क डाल दिया। इंटेंट भी है लेकिन कंट्रोल भी उसके साथ 91% का। एक कंट्रोल्ड अग्रेशन ही इतनी सुर्खियां बटोरता नजर आया है। रोहित के बल्ले से आधा दर्जन मैक्सिमम मुंबई के लिए पेश है। बहुत सी पारियां देखी हैं मैंने रोहित शर्मा की, लेकिन ये सबसे बेहतरीन है, क्योंकि अगर इस शॉट को आप देखें, इस कंट्रोल को आप देखें, बल्ले को एंगल किया है, और उस एंगल्ड बैट से जो विस्फोट हुआ है, एक बिल्कुल डीप पॉइंट के ऊपर फील्डर लगा हुआ है, उसके 20 फुट ऊपर से गेंद दमदमाती हुई फ्लैट चली गई है 6 के। ये नो लुक शॉट था, देखे भी नहीं उस तरफ शॉट मारने के बाद। बहुत बढ़िया पारी यहां पे रोहित शर्मा की। इस बार 19th एडिशन पे 3 इनिंग्स हुआ है, तीनों इनिंग्स 200 के पार। पहला मैच में कल SRH ने 200 के ऊपर किए थे। एक और नहीं, 1 बाउंस, और आरसीबी के लिए सिर्फ 15.2 ओवर्स में खत्म कर दिए। और आज 220 चाहिए। रन रेट ऑलमोस्ट 12 के ऊपर था, लेकिन यहां पे अब 9 पे आ गया है।
अगर आप देखें तो इस वक्त जो रन रेट है वो तो मतलब एट अ रॉलिकिंग पेस है। 11 ओवर में 146, तो ऑलमोस्ट 12.7 का है। तो औसत जो है वो 12.7 मतलब 260 को टारगेट करते हुए जा रहे हैं। तो जो इतिहास में मुंबई ने कभी चेज नहीं किया वो हो सकता है, और वो जिंक्स 13 साल पुरानी है। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट नहीं है। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, जो चीज 13 बार हुई है कि पहला मैच जीते ही नहीं कभी, हालांकि टूर्नामेंट जीते हैं, वो अगर जिंक्स को तोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा आत्मविश्वास, बहुत बड़ा जोश का टीका होगा। ओवर सवाल। लगभग वो मिरर इमेज ना उसी स्टैच्यू की जो कि वानखेड़े स्टेडियम की आन बान शान को और बढ़ाती है। द ग्रेट सचिन तेंदुलकर 2012 के उस सीजन में खेल रहे थे जब मुंबई के इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप भी आई थी। भले ही पहला मैच ना जीते हो, लेकिन रोहित शर्मा का भी शतक पहला आईपीएल में उसी सीजन आया था। बहुत सारी चीजें हुई थी, नींव रखी गई थी आने वाली बादशाहत की इस मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइज द्वारा। इन कमाल की बात है क्योंकि कल 2 यंगस्टर्स नजर आएंगे, वैभव सूर्यवंशी और आयुष मात्रे, लेकिन 2 लेजेंड्स, 2 आइकॉन्स ने समा बांध दिया है पहले 2 दिनों में। बड़े शॉट की इस बार भी कोशिश है दोनों फील्डर्स के बीचों बीच गया, लेकिन गजब का कैच। एक कमाल के फील्डर है अनुकूल रॉय और उन्होंने मुकम्मल किया एक ऐसा कैच इसके तहत रोहित शर्मा की एक और आतिशी पारी होगी समाप्त। एक स्पेशल एफर्ट की जरूरत थी, एक स्पेशल इनिंग्स को एक स्पेशल नाइट पे समाप्त करने के लिए, और वही प्रदान किया अनुकूल ने वैभव की गेंदबाजी पे। एक बहुत ही बड़े और महान प्लेयर ने प्लेट पे रख के मैच दे दिया है, इतनी गजब की पारी। लेकिन ये कैच जो है ये मुझे लगता है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट, कपिल देव साहब ने भी वर्ल्ड कप में, याद है, वो कैच पकड़ा था। ये कैच टकराव भी हो सकता था। कॉल किया, कॉल करने के बाद एक बंदा ठहरा और दूसरा बॉल के लिए गया, और पीछे भागते हुए ये कैच पकड़ना वाकई ही चमत्कार है। मेरा नमस्कार है। गजब की पारी, 148 एक विकेट पे। आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी-कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। अपने मन को बोल, म्यूचुअल फंड्स टिके रहने का गेम है। दूर की सोचेगा और डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। और पेंट से शानदार वारंटी। ड्यूलक्स, डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि पेंट ज्यादा शानदार है या उसकी वारंटी। कप विनिंग कैप्टन इंपैक्ट सब के रूप में आ रहे थे, तो इस बार एक और वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को इंपैक्ट सब की भूमिका में ले आई है मुंबई की ये टीम। नंबर 3 पे सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह बल्लेबाजी नहीं करेंगे। तुम देखिए ये दमकते महकते चेहरे, वो चेहरे दर्शा रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि यार ये मैच विनिंग पारी थी, क्योंकि कल पडिक्कल ने जो किया ना, ये उससे बेहतर करके चले गए। पडिक्कल ने भी कल वो 20-22 गेंद में जो 60 किया, उसी तरह से रोहित शर्मा ने एकदम से, जैसे कहते हैं ना, ओ ले भैया, आते ही कलात्मक, रचनात्मक, क्रिएटिविटी एट इट्स बेस्ट। सूर्य कुमार यादव, क्या बात है। एंड ऑफ द ओवर। जनाब कैच नहीं टपके तो मैच जीत जाएंगे, और जो टपके नहीं छक तो बड़े मजे आएंगे। वाटर प्रूफिंग का चैंपियन लगाओ, एशियन पेंट से डैम प्रूफ कराओ। 80504 पे कॉल करो। 60 सालों में मैंने देश को बनते देखा है। 60 साल कामयाबी के, 60 साल कमला पसंद के। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आपको पता है चीनी, गुड़, हनी सब में कैलोरीज है। फिटनेस के लिए ट्राई शुगर फ्री ग्रीन। इसमें है 100% नेचुरल, 0 कैलोरी स्टीविया लीव्स की मिठास। शुगर फ्री ग्रीन। सूर्य आए, पहली गेंद पे चौका लगा दिया, लगभग वो सुपलाई। 12 में 152। कैच अच्छा पकड़ते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली कप्तान का ध्यान आप आकर्षित करते हैं।
गन फील्डर है या गेंदबाजी उसी स्तर की कर पाएंगे अंडर प्रेशर। चौका एक बार फिर से देखते हैं पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे। इसने सोचा था कि एक ऐसा समय आएगा जब इस शॉट को आप विंटेज कहेंगे। ये सूर्य कुमार यादव ने अपना सिग्नेचर, अपने हस्ताक्षर कर दिए इस मुकाबले पे। सही है, और बिल्कुल परिस्थितियां भी उनके अनुकूल है, सामने भी अनुकूल है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपने 25 करोड़ रुपए कैमरन ग्रीन के ऊपर खर्चे एज एन ऑलराउंडर, अभी तक उन्होंने गेंदबाजी नहीं की। अनिल, व्हाट डू यू से अबाउट दैट? मैं हैरान हूं, क्योंकि इसी बात पे अगर आपको ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में भी श्रीलंका के विरुद्ध जो हारे थे, उस मैच में भी स्टॉइनिस 4 ओवर डाल दिए, सभी ने डाल दिए, लेकिन कैमरन ग्रीन नहीं डाले उस मैच में भी। तो मैं हैरान हूं, क्योंकि ऑलराउंडर के हिसाब से अगर एक इंटरनेशनल ऑलराउंडर है और आपकी टीम इस स्थिति पे है जहां पे आप विकेट ढूंढ रहे हैं और इनको नहीं देख रहे हैं, तो ये देखिए एक ही विकेट गिरा था लेकिन बहुत बढ़िया कैच। जैसे फिल सॉल्ट कल ईशान किशन की कैच पकड़े थे, वैसे ही एक और इंटरेस्टिंग चीज है कैमरन ग्रीन वाली स्टोरी में कि बल्ले से रनों की भी प्रॉब्लम रही है। मैदान के ऊपर से हर शानदार पल पर नजर हमारे किंगफिशर बर्ड कैम की, जो हर एक्शन को कैप्चर करते हुए आपको सबसे बेहतरीन सीट का अनुभव देता है और आपको सीधे उस माहौल के बीच ले जाता है जहां बनते हैं स्टेडियम के सबसे गुड टाइम्स। हमारा किंगफिशर बर्ड कैम व्यू देख लीजिए। हार्दिक पंड्या का वो कैच, अनुकूल रॉय का गजब का कैच, वाइड है लेकिन सूर्य अपनी क्रीज में बने रहे। पहले मन था कि आगे बढ़ना चाहेंगे कैमरन ग्रीन, उनकी चर्चा कर रहे थे हम। एक भी 50 नहीं, काफी सारे मैचेस में पाकिस्तान के खिलाफ जो T20s खेले, एशेज के जो 5 टेस्ट मैचेस खेले, वर्ल्ड कप में भी कहानी वही। शेफील्ड शील्ड में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए एक शतक लगाया, बल्ला भी थोड़ा सा खामोश रहा है। देखिए, आपका जो मुकद्दर है ना, लोग कहते हैं कि जी ये किस्मत की बात है, मैं कहता हूं कि आपका चयन, आप चुनते क्या है। इट इज चॉइस एंड नॉट चांस दैट डिटरमिन्स योर डेस्टिनी। आपने क्या चुना उस पर निर्भर करता है कि आपका मुकद्दर क्या है। अगर आप किसी को एक ऑलराउंडर के तौर पे, एक प्रीमियर ऑलराउंडर के तौर पे 25 करोड़ में खरीद रहे हैं और फिर ऐसे फंसे हुए मैच में उसे गेंद नहीं करा रहे, 6 मिलेंगे, सपाट स्ट्रेट एज अ रैम रॉड, बिल्कुल तीर की तरह सीधा, एक दंदनाता छक्का, ओवर समाप्त। ये इस डेकोर के लिए एसी आ गया और अब बिना पूछे एसी भी खरीद लिया। हेलो लॉयड, टर्न ऑन एसी। Lloyd, tell him this goes perfectly with the decor. तो मूड लाइटिंग हो जाए। India's first designer AC with mood lighting and powerful cooling. हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। इनका नेट रन रेट क्या है? 1 पॉइंट। इनके पॉइंट्स कितने? तुम्हारा फोन है या खिलौना है यार? लाओ, वो फोन किसी काम का नहीं जिसमें क्रिक बज नहीं। डाउनलोड नाउ। पर हम भी जिद्दी है। अपने आईपीएल का सबसे सफल रन चेस पूरा करने के लिए कहानी यही रही है। 2012 से ओपनिंग मैच एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कुछ इतिहास बनाने की तरफ अब बढ़ चुका है। सूर्या का एक और चौका डबल डिजिट्स में। बेहतरीन शॉट सूर्य कुमार यादव, ओवर पिच, और वहां पे बिल्कुल बड़ा गैप है लॉन्ग ऑन और मिड विकेट पे। तगड़े सूरमाओं की टीम है भाई मुंबई, रौंदती चली जा रही है। फिलहाल तो दबदबा हुकूमत बनाए हुए और एक तरफा 13.2 ओवर 170 के करीब स्कोर लगा दिया है। 50 रन रह गए हैं गुरु। मतलब द एज ऑफ मिरेकल्स इज नॉट पास्ट। अनिल बात कर रहा था कि पहले 200 चेज हुआ। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप 200 लगा दो, द ओल्ड एडेज कि यार ये नहीं बनने, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन आईपीएल में कुछ मुश्किल है ही नहीं है, बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है गुरु, जो कभी हुआ नहीं। अगेंस्ट द टाइड सब कुछ चल रहा है यार। कूद कूद मछलियां बगले खा रही हैं।
सियारा सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच। कूद के 205 के स्ट्राइक रेट से रोहित शर्मा ने अपनी एक और खूबसूरत पारी को बुना। फिन एलन पहले ही थोड़ा सा डैमेज करके गए थे, लेकिन असली डैमेज तो इस रन चेस के खत्म होने के बाद आने वाला है। हकीकत ये भी है कि केकेआर के लिए समस्याएं सीजन से पहले ही इकट्ठा हो गई थी। ना राणा, ना पथिराना और आकाश के रूप में जो दीप जल रहा था वो भी बुझ गया सीजन से पहले। आपका जब बॉलिंग कॉम्बिनेशन हिलता है ना, गौतम गंभीर की मुझे अब याद आती है उनकी वो स्टेटमेंट कि भैया एक बैट्समैन आपको मैच जिताएगा, बॉलर्स आपको टूर्नामेंट जिताएंगे। और वो टूर्नामेंट जब जीते थे गौतम एक ट्यूटलेज में, मुझे लगता है कि उस वक्त 106 विकेटें, मुझे याद है 106 विकेटें 6 बंदों ने ली थी और दूसरा बेस्ट 82 था। तो वो बॉलिंग जब बिखरी है ना, उसके बाद संतुलन आया ही नहीं है। और कॉम्बिनेशन जिताता है आपको, बड़े प्लेयर नहीं जिताते। सही जगह पे सही बंदा फिट होता है ना, तब जाके वो कॉम्बिनेशन बनता है। वो जिग्सॉ पजल फिट करनी बड़ी जरूरी है और मुझे लगता है बिखर गई है, निखरने की बजाय बिखर गई है। और शुरू में अगर ऐसी हार मिले एसआरएच के लिए भी और केकेआर के लिए भी, ये खतरे की घंटी है। आखिरी गेंद वरुण चक्रवर्ती की स्पेल की कुछ ऐसी कहानी रही थी बैक एंड ऑफ द वर्ल्ड कप की, जहां पे 10 से ऊपर का इकोनॉमी रहा। टूर्नामेंट की शुरुआत कमाल की थी, पहले 4 मैच में ही 9 विकेट चटका दिए थे। ऑन द ग्राउंड गए और चांस नहीं, एक बार फिर से फील्डर के पास करारा प्रहार किया है और एक और ओवर को खराब किया है वरुण चक्रवर्ती के। 14 में 175 पे मुंबई। प्योरिटी और प्राइस में श्योर, 1 लीटर कैंपा श्योर सिर्फ 15 रुपए में। शुक्र है श्योर है। ये जश्न है, जश्न का ये जश्न है। राष्ट्रीय इलायची जश्न का जश्न। Lights. The all-new Jupiter is more than more. Call alerts, navigation and some more. Mileage is much more. The all-new Jupiter is more than पेश है more. ऑल न्यू टीवीएस जुपिटर, इंडिया का नया ज्यादा इकुआ अधिकम बेशी शास्ता अधिका वधु बेसी। Add bangs on my face. ये जेमिनी तो बड़े काम का है। Best to imagine with Google Gemini. Try now. की उम्मीदें बुनी गई थी इन फैंस द्वारा, जो आ रहे हैं सालों साल ये देखने की ओपनिंग कॉन्टेस्ट है, तो चलिए एक W लगा दिया जाए नाम के सामने। वर्ल्ड कप विनर से लेस ये टीम, इंटरनेशनल कैप्टन से भरी हुई ये टीम, स्क्वाड में इतनी क्षमता की कॉबिन बॉश जैसे खिलाड़ियों के लिए जगह नहीं। विल जैक सैंटनर तो जुड़े भी नहीं है अभी तक। नीचे शर्फिन रदरफोर्ड, नमन धीर, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, एक्सप्लोसिव फायर पावर मौजूद है। गुरु अभी तो ट्रेलर चला है, फिल्म तो देखी नहीं अभी तो पार्टी शुरू हुई है। रात अभी बाकी है और बात अभी बाकी है। कैच की कॉल है, लेकिन सिर्फ दर्शक बनेंगे ये दोनों फील्डर्स, जिनके बीचों बीच से निकाल दिया है 1 और 4। ये उल्टा छाता खोलते हैं जनरली जब इनका आप वैगन व्हील देखते हैं, तो चलिए उसमें एक और लकीर अब खींच दीजिए। ज्यादा गैप नहीं था वहां पे, लेकिन फिर भी सूर्य कुमार यादव बिल्कुल दोनों फील्डर के बीच में से निकालती हुई एक और बाउंड्री। ये देखिए ज्यादा गैप नहीं था, मुजरबानी भी थे वहां पे। कार्तिक त्यागी सोच रहे थे कि कैच होगी, लेकिन मौका नहीं बिल्कुल। संपर्क कैसा, फील्डर नीचे, रिंकू सिंह है तो हाथ सुरक्षित है, तो बात यह निश्चित है कि कैच इस बार नहीं होगा ड्रॉप। सूर्य कुमार यादव तेज रफ्तार से इस रन चेस को पूरा करना चाह रहे थे, फिलहाल डगआउट की दिशा में जाएंगे। और कार्तिक त्यागी जो विकेट डिजर्व करते थे बहुत समय पहले, उनका आखिरकार खाता खुलेगा। सूर्य कुमार यादव मुझे लगता है कि एलिवेशन जो चाहते थे वो नहीं ले पाए, क्योंकि गेंद हाइट ज्यादा पकड़ गई। अगर थोड़ा सा फ्लैट जाती तो मीलों मील बाहर जाती, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस मौके के ऊपर वैल्यूएबल रन्स, 8 गेंदों में 16 रन, वो रन रेट को बनाए हुए और मुंबई जीत की तरफ अग्रसर।
मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप। ये इस डेकोर के लिए एसी आ गया। और अब बिना पूछे एसी भी खरीद लिया। हेलो लॉयड, टर्न ऑन एसी। Lloyd, tell him this goes perfectly with the decor. तो मूड लाइटिंग हो जाए। India's first designer AC with mood lighting and powerful cooling. तिलक वर्मा मुंबई इंडियंस की इसी नर्सरी में तिलक वर्मा नाम का एक पौधा आया और अब पेड़ बन चुका है भारतीय क्रिकेट का। टीम पे काम नहीं बना तो थोड़ा सा नीचे का आना पड़ा, बात वहां बन गई। वर्ल्ड चैंपियन तिलक वर्मा अब स्ट्राइक पे, नंबर 4 पे मुंबई के लिए इस सीजन। पहली गेंद पे इंटेंट बिल्कुल क्लियर, क्लैरिटी के साथ पहली गेंद पे चौका, लगभग उसी तरीके से जैसे उनके वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन ने लगाया था। ये जनरेशन गुरु कौन से ग्रह से आई है? पहला गेंद खेल रहा है बंदा, स्टेप आउट, बाहर से ही मुझे लगता है सेट होके आते हैं। क्या है ये? कवर में यो अपना जमाना था, सब कहते थे गुरु पहली 5 गेंदें देखो, जांचो, भांपो, सबकॉन्शियस माइंड ट्यून होगा विकेट के ऊपर। ये पता नहीं कौन सी ट्यून पे खेलते हैं गुरु। हर बॉल फ्री हिट है। शेरी उसी माइंडसेट से खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है। माइंडसेट की बात छोड़ो, मन जीते जग जीते, ये मन जीत चुके हैं आपने। भय नाम की कोई चीज ही नहीं है, आउट होने का भय इनके मन में है ही नहीं है। एक लाइसेंस देके भेजा गया है, लाइसेंस टू किल, मतलब सामने वाले को तहस नहस करो, आउट हो गए कोई चिंता नहीं। और ये जब ये आश्वासन आपका कप्तान आपको देता है, ये ऐसा सुरक्षा कवच आपको पहना था, और ये वो विकेट सूर्य कुमार यादव अपना वेट ट्रांसफर नहीं कर पाए इनटू द शॉट, इसीलिए थोड़ा वेट पीछे रहा और वो एलिवेशन नहीं मिली, गेंद आसमान की तरफ गई। अगर थोड़ा सा फ्लैटर होती तो वो एलिवेशन जो वो चाहते थे वो मिल जाती, बिकॉज वो पिछले पैर पे गए और उसके बाद वो वेट ट्रांसफर नहीं कर सके इनटू द शॉट। दैट्स द रीजन दैट ही गॉट आउट। तिलक वर्मा भी साउथ अफ्रीका में 2 बंदे थे, संजू सैमसन और तिलक वर्मा, back to back hundreds on those pitches where South Africa dominated India for a long time. आप भी इस बात का कोई प्रमाण तो देने की जरूरत नहीं है। वहां जाके भारत के ये यंगस्टर्स विजय पताका फहराएं, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराएं और 2-2 वो भी 20 ओवर में नहीं, 12-12, 14-14 ओवर में। सैमसन ने वही किया, वही तिलक वर्मा ने किया। दैट सीरीज एक्चुअली वाज अ टर्निंग पॉइंट as far as belief is concerned। और उसके बाद तिलक वर्मा has never looked back। कभी-कभी स्लो गेंद आता है तो थोड़ा फंसते हैं, but then even the sun has spots। हर आदमी में कहीं ना कहीं बेहतरी के लिए स्कोप होता है। The biggest room in this world is a room for improvement। डॉट गेंद के साथ ओवर समाप्त। 8 रन इस ओवर से भी आए, लेकिन वो विकेट भी आया। कार्तिक त्यागी का खाता आखिरकार खुल गया। सीएटायर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का वक्त आखिरी बार आज की शाम वानखेड़े में। क्रिकेट लवर पढ़ती है न्यू वीवर मैच। Are we? KKR versus Mumbai Indians. Give us a fun challenge to settle the debate. New AI mode in Google search. Character, the taste of success. This broadcast is co-presented by Campa Energy, Unstoppable Banja, Havells, Making a Difference, and the new AI mode in Google search, co-powered by Hero Motocorp in association with Mutual Funds Sahi Hai, Carrot Lane, a Tata product, Asian Paints, Muthoot Finance Gold Loan, Vimal Ilaichi, Grow, Cadbury Dairy Milk, टाटा AIG है तो भरोसा है, EV पार्टनर TVS मोटर कंपनी एंड कैंपा श्योर, शुक्र है श्योर है। इस देश में फिर वही करोड़ों की आबादी वाले इस देश में बखेड़ा होगा जरूर, क्योंकि अब ये देश 10 टीमों में बटेगा। ये दूरी का इंडिया अब एक होके देख। टाटा IPL हर शाम 6:30 बजे। This broadcast is co-presented by Campa Energy, Unstoppable Banja,
Havells, making a difference. And the new AI mode in Google search, co-powered by Hero MotoCorp in association with mutual funds Sahi Hai, Carrot Lane, a Tata product, Asian Paints, Muthoot Finance Gold Loan, Vimal Elaichi, Grow, Cadbury Dairy Milk, टाटा AIG है तो भरोसा है, EV पार्टनर TVS मोटर कंपनी एंड कैंपा श्योर, शुक्र है, श्योर है। वो शॉट डालता था और वहां से हुक बारंबार और फिर उसको चिढ़ाते थे। उस उम्र में जब बाबू को कोई खेलने को तैयार नहीं होता था, अनिल वुड रिमेंबर दैट, कोई खेलने को तैयार नहीं होता था, वो छोटू धाएं धाएं करके उसे छक्के मारता था नेट में। मुझे वही जोफ्रा आर्चर के बारे में बताया गया है कि जोफ्रा आर्चर को कोई खेलने को तैयार नहीं होता था राजस्थान रॉयल्स के नेट में, लेकिन गुरु ये बंदा वैभव सूर्यवंशी उसे बहुत ललायत होके खेलता था और उसी तरह से बाहर भेजता था जिस तरह से मैचों में भेजता। सियर टायर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट खत्म होता हुआ वहां पर जीत के लिए 38 रन 30 गेंद। मैच पूरी तरह से मुंबई इंडियंस के गिरफ्त में इस वक्त। यहां पर केकेआर के पास क्या विकल्प है? 2 ओवर नारायण के बचते हैं और मुजरबानी के 2 ओवर। प्रमुख गेंदबाजों को लाना होगा अब यहां पर यदि मैच में आना है। और आप ये अक्सर नहीं थे देखते कि वरुण चक्रवर्ती जितने रन्स के लिए उन्होंने गए 4 ओवर में 48 रन के करीब, और नारायण को अब तक इस्तेमाल पूरा किया नहीं है। नारायण को जरूर मुझे लगता है कि इसी वक्त लेके आना चाहिए था स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद। आपने कहा 2 उनके बचते हैं और 2 सुनील के बचते हैं। मुझे लगता है मैच में कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा है गुरु, क्योंकि अगर आप देखें 5 ओवर में रन्स कितने बनने हैं और विकेट्स इन हैंड, और ये तो आउट है भाई। शायद आपकी जबान किस तरह का ये मतलब डिस्पैच्ड विद डिस्टेंस, किस तरह की अथॉरिटी है, लाइक अ बुली। मतलब बंदा अंदर से ही सेट आ रहा है और इस वक्त इतना विश्वास जग गया ना मुंबई की टीम में कि भैया ये हमारी गिरफ्त में मैच है, ये हमारे खीसे में मैच है, जेब में धरा हुआ है मैच। तो यहां से मुंबई नहीं, इतने प्रोफेशनल्स हैं यार, 3-3 कप्तान हैं और एक और कड़क शॉट। 2 फील्डर बाउंड्री पे हैं गुरु, थर्ड मैन और उसके साथ ही एक डीप कवर, उन दोनों के बीच में से इस रफ्तार से गई है गेंद, मानो हथगोला छूटा है। और देखिए उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए किस तरह से खड़े हो, मानो जान चुके हैं कि भैया ये मामला, ये मेला लुट चुका है। रुपए ऑन द गो फॉल्स में रोहित शर्मा सबसे ऊपर। इस मुकाबले में रघुवंशी ने भी 6 चौके लगाए थे। फिन एलन, रैन रिकल्टन, इस बार भी गेंद छोटी डाली थी। तीनों डिलीवरीज जो डाली अभी तक, तीनों की तीनों शॉट आउटसाइड ऑफ स्टंप। 16 के बाद 193 पर 3। गांव को नगर, नगर को महानगर बनते देखा है। हाँ, पिछले 60 सालों में मैंने देश को बनते देखा है। कमला पसंद, 60 सालों से अनोखा स्वाद। This broadcast is co-presented by Havells, making a difference, the new AI mode in Google search, and Campa Energy, unstoppable banja, co-powered by Hero MotoCorp in association with mutual funds Sahi Hai, Carrot Lane, a Tata product, Asian Paints, Muthoot Finance Gold Loan, Vimal Elaichi, Grow, Cadbury Dairy Milk, टाटा AIG है तो भरोसा है, EV पार्टनर TVS मोटर कंपनी एंड कैंपा श्योर, शुक्र है, श्योर है। अचीव करना, और अब वो दोनों जो फोकल पॉइंट है उसके करीब है ये टीम मुंबई इंडियंस। 193 पर 3, सिर्फ 28 रन चाहिए 24 गेंदों में। अभी भी सुनील नारायण के 2 ओवर बाकी, उनको लगाया नहीं गया। कार्तिक त्यागी पिछले ओवर में विकेट मिला था। शॉट डिलीवरी, कनेक्शन उतना अच्छा है नहीं, पर 1 बाउंस रमनदीप सिंह के हाथ में। सभा, जब दुनिया कहे ना कि आप ये नहीं कर सकते और आप उस दुर्गम कार्य को कर देते हैं,